Good morning, friends. It's December 25th. It's a special day, and I'm in front of you presenting or starting the Akulmach live stream. And this live stream, we are starting with the section on science. And the biggest challenge we have is basically to spread out into the space as humanity and colonize other planets. And when we're trying to colonize other planets, then we have to be very careful about the characteristics of those planets. What kind of weather system those planets have, what kind of gravity that planet has. So when it comes to understanding the size, the distance from their central star, those kind of things are very easy to understand. We can actually measure that using the acute knowledge of science that we have. However, it is very difficult to first of all identify what kind of environment those planets will be having. And our exploration as a species has just started. And therefore, when we talk about going into the space, going to other planets, we also have to understand what kind of challenges that planet will offer us. So first of all, we don't have very strong mechanism to look at those planets from here, because depending on the technology that we have today, it's very hard to look at the planets. I mean, we can see all the planets in the close by vicinity based on the technology that we have today. However, the scientists have sent specialized probes which can identify the planets, also identify their weight, mass, distance from the sun using some algorithm. And these satellites are working very heavily, and so far we have been able to identify nearly 5,000 planets, which are known as exoplanets. And this 5,000 exoplanets are very close to the Earth. If you look at the vicinity, they're quite close to the Earth. Yet we do not know anything about their weather system, what kind of environment they have, whether they have storms brewing, whether they have a lot of heat in the atmosphere when we land on those planets, or we send something, will it survive, because if there is so much heat on those planets, etc. So I mean, we have not gone beyond Earth. I mean, we have not even colonized Moon, which is just next door. However, the knowledge is important. When we are looking at the other planets, the knowledge is very important. And therefore, when we talk about settling into other planets, we have to know exactly what kind of environment, whether they are having day, night, how much time the planet takes to revolve around the star, etc. For that, we have special equipment which we can use to monitor. However, it is very difficult to see the weather pattern of these exoplanets that we have identified. We can only speculate that these planets are very close, very Earth-like, and probably good candidates for our future generations to plan a trip to those planets. However, as I said, knowledge is very important, and therefore when we actually look at our own solar system, we can get some sort of benchmark that, okay, since these planets are in the similar position, have similar mass, similar makeup, just like the planets which are present in our own solar system. Therefore, those planets may have such conditions. So the satellites are doing their job. We have to also do our job of applying logic. And the first thing that we have to do is basically identify what kind of environment each planet in our own solar system has. And that will help us get some knowledge about what may be going on in those exoplanets. All right, so let's move ahead and let's try to understand the different planets that we have in our solar system,
starting with all the 8 planets, all the major 8 planets. And you know that roughly this is how the solar system looks like, where the inner planets, Earth is one of the inner planet, and then there are exterior planets, which are primarily 4 planets, which is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. And these 4 planets are huge, and therefore they have their own ecosystem, they have their own satellites. So in nutshell, these planets which are in the like Jupiter, Saturn, can be classified as systems on their own merits. So considering understanding of our own planets on the solar system, we will actually get some idea how those exoplanets will be if future generations plan a trip to those planets. So let's start our journey understanding the planets, starting with Venus. We are skipping the Mercury, because Mercury does not have any atmosphere, or the atmosphere is not permanent, because it is very close to the sun, and whatever atmosphere Mercury has can be blown away by the strong radiation coming from the sun, because the radiation or the solar wind will actually take that environment, atmosphere, and blow it out. So we can actually leave the Mercury, because it will be very difficult to even go there and settle down. So therefore let's look at the Venus. Now Venus is in the habitable zone of our solar system, and it's yet very hellish because of the runaway greenhouse effect. Venus is a very peculiar planet. It is the hottest planet in our solar system, and it has very high concentration of CO2. And as you know, CO2 is a greenhouse gas, and the greenhouse gas basically traps the heat from the sun and does not let it go away. So it gets keep absorbing the heat, does not allow heat to go go out of the system. Therefore over time the surface temperature of such planet which has very high CO2 in their atmosphere will become a runaway greenhouse planet. That means the surface will be so hot that even the lead melts. So about 400 to 500 degrees centigrade, that is the temperature on the surface. And because the temperature is also high, and it's a fairly large planet, so it's known as the twin planet of the Earth. So it has substantial gravity, and therefore the atmosphere is also very thick. So very hot, high pressure environment, which is not suitable for human settlers, or for that matter any life to form, because it is so hot that life cannot form. And at the same time, recently scientists have found there is substances which are produced or which are present in the Venus atmosphere. Essentially those substances can only be produced by organic processes, that means life. So one speculation is that in the past, before the planet became a greenhouse hell, probably the life started on Venus, and from there it actually immigrated to Earth. That is the hypothesis. No proof to prove this hypothesis. However, if there is a planet, exoplanet, very similar to where the Venus is, and it has very high CO2, carbon dioxide, then the chances are it will not be suitable, it will be hellish, and there is no point in sending human future generation to that planet. All right, let's move ahead and visit our next planet on the list, which is Mars. Well, I'm skipping Earth again because we know everything about Earth. We know probably more about Earth than any of these planets. So Mars is also in the habitable zone. I mean, let's look at the Mars. It's in the habitable zone. That means life could exist. Yet there is no evidence of life on the surface of Mars, simply because the
atmosphere is very thin. Mars is a small planet, and the atmosphere on the surface of Mars is very, very thin. And because of low pressure, which is almost 100 times less pressure on the surface of Mars as compared to Earth. And again, Mars is a smaller planet, so all the water got evaporated, and when the water rises in the atmosphere, the solar radiation will break down the water molecule into its constituents, which is hydrogen and oxygen. And hydrogen will escape into the space, into the open space, because planet is so small it cannot hold the hydrogen in the atmosphere. You need to have more gravity to have hydrogen rich atmosphere. So hydrogen escapes, leaving behind oxygen, and then gradually oxygen combines with carbon, creating a CO2 environment. So again, there is a lot of CO2 in the atmosphere of Mars, and the pressure is very less, and it is also very cold. Average temperature on the equator is something like minus 60 to minus 80 degrees. So again, it's not very comfortable. However, we can reverse the process. If we have the technology, we can actually terraform planets like Mars. So we will not, it's not like hell, but it's basically the opposite of what the Venus is. It's quite cold with no water. The breathable air is not conducive for humans to breathe, etc. So we know exactly how the atmosphere of the Mars. In fact, a lot of probes are probing the surface of the Mars as we speak today. You know that. Let's move on to the next planet, which is Jupiter. The Jupiter is a gas giant, and Jupiter is huge planet. Jupiter has an atmosphere, and Jupiter is so big, nearly 100,000 Earths can fit into the entire planet. Jupiter is made of gas, and Jupiter has very high gravity, and the constituent of the Jupiter is basically, as we say, it's a hot planet, hot gaseous planet. It consists of nearly 90% hydrogen, and again all other material is available in Jupiter, but then next big element in Jupiter is helium. So chances are, if we see a gas giant exoplanet anywhere else outside the solar system which is similar to Jupiter, a giant, it would be hot, it would be heavy, it would basically influence the entire solar system because it's so big. It is a system by itself. It has nearly 80 satellites, and some of these satellites can harbor life. Some of these satellites are basically having conditions like water, ice, heat, because of the the Jupiter imposed gravitational effect on these satellites, and therefore there is a lot of interest on the Jupiter satellites like Europa. The future missions are already planned, where humans and scientists will actually examine by 2035. We will start getting those inputs, because it's time for our spacecraft based on the technology to reach Jupiter, because Jupiter is very far off. However, if you look at the planet Jupiter, it's quite hot from inside because the gravity is huge. It is crushing the material inwards. It is actually crushing the material inwards, and when you increase pressure, what happens in a pressure cooker? The temperature increases. So the internal heat of Jupiter is driving the weather system of Jupiter. Huge storms which never fades away are on the surface of Jupiter. There is always very strong wind, cyclonic conditions, and then because the temperature variation is also there on Jupiter, each band, it actually forms band of different conditions, different environmental conditions, like jet streams going around the planet. That is why we see stripes on the surface of Jupiter, because each band has a different condition on the surface, and therefore it's very turbulent. For any structure to exist,
because moment you put a structure in the planet, it will disintegrate into multiple micro pieces and it will just break apart. So it's very difficult to go to such planets. However, there are satellites on those planets which are showing a lot of promise, and some of these satellites are having strong gravity, presence of lot of water, presence of heat, and presence of salts, which are also essential for origination, which we speculate that because of these salts life started in the first place because of the permutation combinations. So such things are available on these satellites of Jupiter. Therefore, when we look at an exoplanet which is similar to Jupiter, we can actually safely say that, look, this planet looks like Jupiter, so it will have similar conditions, plus or minus 5% variance. All right, so let's move to the next planet on our list today, and that is Saturn. Now, Saturn is also very similar planet like Jupiter. However, it is not as massive as Jupiter, and it's quite light. In fact, Saturn is huge. It's hot, but the density of Jupiter is the least among all the planets which are found in our solar system. So Jupiter type planet, if you have a hypothetical ocean or a body of water, huge body of water, in which you can actually put Saturn as a planet, you would be surprised that planet Saturn will actually float, because it has less density than the water itself. So it is less dense, yet it has huge gravity. It also has band systems, and it has huge weather systems on the planet. Similar to Jupiter, even Saturn has army of satellites, and some of these army of satellites may have living lifelike conditions. And these planets are so far off from the sun, on these satellites, the planet itself drive the cycles, weather cycles, heat cycle, etc. The planets which are so far up, like Jupiter, Saturn, Uranus, they actually create conditions on their own neighborhood satellites, that these satellites will be able to harbor life, and they will not be dependent on the central star system, just like we have on Earth. Earth energy comes from the sun primarily. However, if there is the satellite like Titan on Saturn, it will get its heat because of the gravitational pull from the Saturn, and that will create internal heat. And even Titan is actually showing a huge promise when it comes to finding life. So it's a good enough benchmark for us to look for similar exoplanet when we look out into the other star systems nearby. So let's move on to the next planet on our list is Uranus. Uranus is the least studied planet. It is rather dark, and Uranus is the only planet which is in the state of equilibrium in our solar system. When we say equilibrium, is that each planet, they absorb heat and they also radiate heat, because planets are not generating any light, just like the star. So they get the heat from the star and they also radiate it outwards. However, Uranus is in the state of equilibrium because it takes X amount of heat and also radiates the similar amount of heat. So it has become a stable environment, yet it is the least studied. I mean, it's been almost 40 years since we actually sent a specific probe to study Uranus. We do not know too much about Uranus, except that again, it's a cold gas giant, it is known as, because it's so far off. It is in the state of equilibrium. It has a weather pattern which is not very well understood yet. Inside the planet, the conditions could be such that the carbon will actually become diamond and then rain diamond to the core. So essentially, a planet like Uranus may have a diamond core, but more study is required to understand why Uranus is like that. What are the constituents
people feel that it is made of methane. Why methane? So a lot of understanding is yet missing from our on our exploration. So I think in future we may send a specific probe to study planet like Uranus. Let's move on to the next one, which is the Neptune. Neptune is again a very interesting planet. It is the original blue planet. It is many times bigger than Earth, and the blue planet, as it is known as, is not because of the water. Like for example, Earth is also known as the blue planet. It is because of the type of atmosphere and the presence of water on the surface. Because of that, all other light in the light pattern are absorbed except the blue, and that is why we see the blue Earth. However, Neptune is also a blue planet. It's actually more bluer than the Earth itself, and that is because it has some mixture of gases which absorbs the systems light, and it actually reflects only blue light, actually deep blue light. Again, Neptune is not very well understood. It has army of satellites. Why their satellites are existing, and Neptune is very far off, very extremely far off planet. Hardly any light from sun reaches there, yet the atmosphere is very violent on Neptune. The storms which brew on the surface of Neptune can reach the speed of 2,500 kilometers an hour. You can imagine, the strongest hurricane on Earth will not cross 200 kilometers an hour. 2,500 kilometers hour is the constant wind which keeps blowing on the surface of the Neptune. And again, it's called ice giant. It's very cold. Conditions are quite cold, and therefore we need to understand, if we find an exoplanet very similar or in the similar position like Earth, then like Neptune, then what could be the conditions over there. So by studying our own solar system, we can actually draw references about how how the conditions would be on the various planets in our solar system. And also we can actually draw references about the exoplanet that may exist outside the solar system. So we have kick-started our day by understanding the the science which surrounds us, and today the subject was how can we understand more about the planets which have been identified outside the solar system. So friends, I will meet you in the next section, which is the business tip section, and business tips are very important, so don't go anywhere. I will be joining back shortly after a short break.
Welcome back, friends. And we are actually starting the business tips section, and we know that we are actually celebrating all festivals from all religions across the world, and the biggest festival is Christmas, which is today. So Merry Christmas to all of you. And if we are talking about business tips, is basically meant for business people, for people who are doing online business or even offline, what they should do to maximize their revenue, their returns, and leverage the festival season. And that is the topic of our discussion today. By the way, we are running a contest. If you look at the commands here, if you just send us a message with exclamation followed by join, you will be immediately put on a lucky draw. So if you're watching us live, you can use this command to join the lucky draw. So this is also going on, so make use of this contest, because at the end of the contest, lucky winner would be given a free angel tarot reading, which is worth 1000 rupees. So don't let go this opportunity. Just send in a message with exclamation followed by join, and you will be put in the contest. It's a lucky draw. Why don't you try your luck today? All right, let's start our business discussion. And the business tip we want to give today is how do you leverage the festival season to increase revenue for your company, for yourself. If you're running even if you're an entrepreneur or a solopreneur, how you can use the holiday season to sell more, sell fast, and what you should do. And therefore, since it's a holiday season, most of the people would like to get some deals, so how you can actually create deals and attract new buyers is the topic of our discussion that we will discuss today. So we have to basically ensure that we come out with innovatively some freebies. It's not actually good for your business, because if you're offering something, some gift or some freebies as part of your business sale which is happening in your organization, then you will not only attract the loyal customer, but you will also attract the customers for the period after which, after the holiday season. After the holiday season is over, you could actually provide certain packages so that the customer comes back and engage with you after the holiday season. So it's very, very important to leverage this period and look at what you can do to maximize your sale. So let's look at first option that you have. First option that you can use is provide a gift certificate. So if your company is selling something, you can say that only for select customers we are giving certain gifts. And when we talk about gifts, you can actually decide based on your price performance of your company or the kind of product that your company is selling. You can understand what is the gift, and if you want to set up a threshold that minimum deal size, minimum customer should be worth at least, say for example $100, then you will give a gift of $1,000 to that lucky person. So you can also say that, look, if you buy during this holiday season, you will be given a gift which you can come back in month of January and buy something else, or exchange that gift coupon for something else. So that will ensure that you not only close a deal today during the holiday season, but you're actually attracting a client for after holiday season, once the new year starts, and then customer can come back in the month of January. So you're actually, it's like a forward contract. So gifts can be, gift voucher, gift certificate can be used very effectively to increase revenue for your company. So friends, don't overlook this one, because you don't spend any money about launching a gift
for your organization or for your customer. There is hardly any cost associated, except that you may have to use some sort of software, because if you're setting up some threshold, like for example some order value of $100 or $50, that in order to become eligible for this gift voucher you have to spend some amount. If you're setting up this threshold, then you will have to get a software installed, and automatically customers will be given gift voucher as and when they actually place an order above that threshold on your company. You don't have to spend money, because whatever softwares you want to use can actually may be available for free. There are a lot of software which are available for free. All you have to do is download them, put it on your website, or put it in your office or a point of sale systems, and it will help you. These softwares will help you generate gift certificate, which will also ensure future deals for you and also generate loyal customers. Let's look at the next item on the list that we can use is use the presence on social media. So when we are actually talking about increasing our revenue, there are various mechanisms. There are various mechanisms which uses there are various mechanisms where we can actually increase our sale. You could have a shop, small shop, or you could be selling online. So even if you're selling online, if you are not selling on the social media, if you're not propagating on the social media about the schemes that you're launching, about the gifts that you're launching, then it may be your message may not reach the right audience. So you have to ensure that use or leverage social media to the maximum. You should be able to create campaigns on social media, on Facebook, on Instagram, on YouTube, and these campaigns will actually propagate your messages. Now some of these campaigns can be paid, some of the campaigns can be not paid. You can actually leverage your network. So make sure that you use social media. Decide whether you want to spend money in terms of promotions, or you don't want to basically just it's like a word of mouth in your own network. Make sure that you leverage those facility which are provided in the social media. Very, very important, because social media is available for you to leverage, and if you don't use it, how people will know that you're running such schemes or giving gift certificate, etc. So that is number 2 that you should do this holiday season. Let's look at the next item on the list. This is where most people sort of they just fall short. The call to action is missing. Whenever you do something, you do not follow it up with a system where a call to action is also implemented for your customers. So what happens is that customer says, okay, fine, I'm going to get this gift voucher if I spend $50 or $100 with this company, but then there is no place to get that, the next click. The call to action is missing. So you have to make sure that whenever you implement this gifting or some sort of scheme this holiday season, make sure that your call to action is very thoroughly implemented. Because if you do not implement call to action, then even though you have done everything right, but it will not yield anything for your organization in terms of increasing revenue or leveraging this holiday season which is running, friends. So these are certain things that please keep in mind, and make sure that the call to action is always taken care. In fact, that is the first thing that you should do. And when we say call to action, is something that the customer will read your promotion message, and then what is the next step in order to convert that customer into your ecosystem. That is called call to action. So whether they have to click a website, whether they have to pay the money, there is a point of sale attached to that promotions. So people actually don't think about those call to action, because that is very, very most important thing in any business. Now let's look at the next thing that we must be careful about.
is that leverage the holiday season itself, because if you don't leverage the holiday season, then this opportunity will be lost, and you'll have to start the next year from zero. So make sure that during this holiday season, think about how you can convert your one-time customer into a loyal customer or a long-term customer by introducing some sort of gift voucher, either as a discount coupon or a 100% free item if the customer comes back after the holiday season is over. You can actually set up this time and make sure that you think about this and implement it now, because now we have only 1 week left in the new year and you have limited time. So make sure that you leverage this holiday season to increase revenue, not for now but also for next quarter, which is the first quarter of next year. So friends, I will take a short break and I will meet you in the next program, which is the top companies in your state. So it's very, very interesting. Don't go anywhere. We'll be joining back after a short break. Welcome back, friends, and in this section we will understand the top companies. This program is about identifying the top companies in your state, and if you want to know what are the top companies, whether you're a small business or you want to start a career with a top company in your state, then you have reached the right place. So right now we are actually doing research on the state of Haryana, and the state of Haryana is a small state but very influential because it's very close to the capital region, and we are going through the top companies in various segment wise top companies, and today's segment is the food and beverages. So do you know the top company in the F&B, food and beverages space sector in the state of Haryana? If you know the answer, you can send it across. I will display your name here on the screen, and by the way, we are live across all social media, so you can actually engage with us. Now I will also like to inform you that we're running a lucky draw. The command of joining the lucky draw is given here. It is exclamation followed by join. So if you send a message with this command, you will automatically be placed in the contest, and there is a possibility to win a free tarot reading which is worth 1000 rupees, angel reading for you if you participate in this contest. So don't miss out. Just all you have to do is send this message, exclamation followed by join. All right, let's continue our journey of understanding the topmost company in the state of Haryana in food and beverages. So do you know the answer? Let me give you the answer, friends. And the company is Britannia. Believe it or not, Britannia is the topmost company in the food and beverages space in the state of Haryana. Well, Britannia is basically known as the biscuit company, and they also produce a lot of other items like cheese and bread. So essentially they fall into the food and beverages sector. There are well-known names in F&B space in Haryana, but we are actually identifying the topmost company and the influence of this company on the state and what it does for the people of the state, etc. So Britannia
produces confectionery, biscuits, cheese, bread, etc., has the highest amount of influence in the state of Haryana. Therefore, in the F&B, Britannia is numero uno. Why they are number one? Let's understand this in greater detail. Well, Britannia is a company from Kolkata, which is West Bengal in India. However, they have chosen Haryana as their second is the second biggest manufacturing facility in India in Gurugram, and that is why, even though state of Haryana is small, but you can imagine, the India's biggest confectionery, one of the biggest F&B player, having the second biggest facility placed out of Gurugram in Haryana, it will have such a big impact. It's not only because of the consumption of the items it produces, but it produces in the state of Haryana, which are then shipped across India. So the nearby states may be getting the produced biscuits, bread and cheese items from this factory, and therefore the second largest factory is in the Gurugram region in the state of Haryana. So you can imagine, how many people will be working there, what is the kind of influence, the shipment, raw material coming into the factory, produced goods going out of the factory. So it's going to be a huge operation, and that is why the influence of this factory on the state of Haryana is immense. It will also add to the state economy. It will also provide jobs, not only fulfill the needs of the people, daily needs of the people, which is in terms of bread, because you consume bread, biscuits every day. So even though when you look at food and beverages, Britannia may not spring up into your mind immediately. However, it has a big impact, and therefore Britannia is number one in the state of Haryana. Let's identify what are the other factors which affects the numero uno position of Britannia, which is they produce cookies, cakes, and things like side dishes, breads, and they have variety of these items. They have biscuits for every taste, every palate that humans have. They have different kinds of breads, and they have different kinds of cheeses and cheesecake, cheese products. So therefore, Britannia as a company has a huge market base. Wherever you are in Haryana, you are consuming Britannia product every day, maybe more than once sometimes, or at least once. Everyone is actually buying Britannia product, each individual. So the state is, Indian states are big, they are like any European country. So imagine a state which is as small as Haryana. Imagine the amount of business they may be making in the state of Haryana itself, in terms of by selling those items which they produce. So therefore it has a big impact in the state of Haryana. Let's look at the other thing, is that among these different products they also have a very strong and diversified portfolio of products. For example, when you look at the light biscuits like Marigold, they also have Marigold Plus, and then they have Marigold. At the same time, they also produce a very popular biscuit called Good Day, which is liked by everyone. And they also have the lightweight biscuit choices, which are known as Nutri Choice. So among the product itself, they have variety. So if you look at each and every item they produce, they will have a big portfolio of items. That means they want to cover the entire market, and even if you are a consumer, you will not be able to avoid Britannia product, because you end up buying something which suits your taste palette. So they have a very strong portfolio, and that is why they have a huge consumer base in the state of Haryana, and that is what makes them number one in F&B segment. Let's look at the other item, and that is they are the community champion. And when we talk about community champion,
they are contributing immensely to the state of Haryana. They are providing a lot of jobs. They are also contributing to a lot of CSR activities in the state of Haryana. They are adopting villages, providing child education, donations, plantation. So they are huge. After West Bengal, this is the second biggest facility in India they have, and therefore the influence on the state of Haryana is also immense when it comes to community. So you can be a simple F&B factory, but then you have to contribute, and that is exactly what Britannia is doing. Britannia Industries Ltd is doing for the state, generating revenue, generating jobs, also contributing to improving the lives of the people, and also ensuring that the child education is also taken care of. So these are certain things which are important when it comes to acquiring the number one position in the state of Haryana, and therefore Britannia has reached the number one position in F&B segment in the state of Haryana. Now, if you are living in the state of Haryana and you want to strike some sort of business deal with F&B player, you should not ignore Britannia, because they are having the second largest factory in or production facility in the state of Haryana. And if you are a supplier of raw material like wheat, barley, milk, cheese, then you can actually set up a long-term lucrative supply relationship with Britannia, because Britannia producing so much, they would always need the raw material in their factory on daily basis. Therefore, this is something that you should keep in mind. At the same time, they have the second biggest facility in India, in Haryana. So if you want to start a career with a large industry, Britannia is something that you cannot ignore, because trust me friends, if you're looking at the entire business itself, they may require people from all walks of life. They would require not only cooks and chefs, they would also require whole lot of distribution, supply chain professionals, IT professionals, security, constructions, management. The entire lot is required by Britannia, and so leverage this availability of the large industry in your state, and start thinking about starting a career with a large organization like Britannia. So friends, I will meet you tomorrow with another company in your state. The name of the program is known as Know the Top Companies in Your State. See you tomorrow. We will actually begin our next section after some time, so don't go anywhere. We'll be joining right back after a short break.
Hello, good morning. How are you today? And today I am taking up the Vaastu of drawing room. And as you know, that so drawing room is a quite a important place in the house, because where most of the family members also sit at the same time. There are people who come out from other areas of your knowing, and people guests come, so it is very important that you should have a perfect Vaastu as far as drawing room is concerned. So please make sure that your drawing room is on east or north side of north side of your house, and never be on southeast corner. So also make sure that you have airy disposition of windows, and that will again help you for a better inside, better circulation of your ideas, and things will work out when you have a proper Vaastu in as far as your drawing room is concerned. And even if you don't have northeast, then northwest is also one of the better position for placing or establishing or making drawing room. So make sure that at the same time the drawing room of the drawing room's row, the door should be either on the east side or on the north side. So furniture, when you are actually arranging the furniture, then also you should make sure that you whatever energies which are being circulated in the drawing room should be positive. And as I was saying, that north east and north door in the drawing room is the best, but actually if your door is on south side or northeast or southeast, then that will bring more hard work. I mean, you have to do a lot of hard work. And when you are making arrangements in your drawing room, make sure the head of the family always sit on facing north side or east side. He should always remain on command on the guest. That is very important. Then sometimes you also put TV, so always put TV on southeast, north, and make sure that your TV should not be on northeast side. And again, it is very important that your drawing room should be actually clutter free. Lot of things when you are placing in the drawing room, that's not good, because again that creates challenges. And at the same time, I also want to tell you that air condition is a critical and very important aspect of drawing room. So air cooler, air condition, you should either put on west side or east side, and never put air condition in southeast side. And in case if you want to have if you want to have some good paintings, so make sure that you have good paintings, especially in northeast side. And at the same time, the painting should not be like, I have seen many people who are placing paintings of a lady with a tear coming out. That kind of painting, negative painting, you should never put in your drawing room. That creates a negative vibes. And going forward, it is also very important that what kind of
color you put in your drawing room, that can uplift your mood, can enhance the functionality of drawing room. So make sure that you have lighter, especially warm white color is really good. Light yellow, light green, and that is also very convenient and very good. At the same time, when we are talking about the furniture, tables, so don't put any round actually table. Avoid circular or oval table. Always put rectangular or square furniture. And as far as sometimes in drawing room we also have staircases, so make sure that staircases should either be in south side or west side or southwest side. So that is again very important. So very important. And always make sure that when you are decorating your drawing room, it's very essential that you should never put artificial flower. Always prefer to have natural flowers, and that again will give a boost. And bonsai, you should never put bonsai in drawing room, because you know that bonsai generally reflect that you are stopping the growth. So in case if you are placing plants, so make sure that you have more vibrant plants, more good plants rather. Just avoid putting bonsai. At the same time, if you want to keep aquarium, so if you put aquarium in east side or north side or northeast side, because it is a powerful remedy for negativity. It creates a positive vibes. And in case if you want to also put a water fountain in the drawing room, please put it in the north side. So this is something which I wanted to tell you about Vaastu of drawing room. I will be meeting again in the next Vaastu tips for your home, for your factories, or for your business place. Till then, let me take a break. And I just want to remind you that we are running a contest, and for that you have to just type exclamation and join button. That will you will be in the contest, and whoever wins this contest will be getting free Angels reading worth of 1000 rupees. So I'll be taking break, and so I will be making Hello, welcome to our history section, and today I am taking up a very interesting topic. And today is an important day, and of course today is 25th of January. We are celebrating Christmas, and so before I go forward, happy Christmas to everybody. But a part of Christmas, it's an important day because today to find out what's happening in the space, the James Webb
telescope was launched at 5:20 IST. So it is important day, and we will be discussing about this. So when we are talking about James Webb, and it is, as I told you, it's the largest optical telescope in space. And when we have how it took the help of especially 5 rockets for James Webb to actually install in the space. And now who was the James Webb, who was the first director of the NASA? On his name, the James Webb is named. And you know that James Webb is what is the 4 key goals of James Webb? The key goals actually is basically to search the light from the first stars, galaxy that are formed in the universe after the Big Bang, and to study the galaxy formation, to understand star formation and planet formation. So it is really, really very important, because we want to know what is happening. So what is happening in far star structures, far space, and is there any alien civilization where we can talk to them, or learn from them, or at least find out. So this is really, really very important James telescope for future human development. And it also, you know, the specialty of James Webb is that it can actually look into very far places. And how much far it is? 28 billion light years. And today the James Webb is looking the distinct star, which is Ireland, that can be seen in a magnifying image. So it's very, very important. At the same time, what James Webb have achieved till now, the James Webb achieved that there is the analysis of atmosphere in the space, and that also include the water around the giant gas planets, and at the same time the formation of new stars. And when we are talking about the new stars, that means that the James Webb actually witnessing in the new birth of new stars in the pillar of creation, which is Eagle Nebula. At the same time, James Webb currently, where it is situated at the moment, it is the James Webb Space Telescope currently is situated in the constellation of Orion. So that is something which I want to actually tell you, and how important it is that whatever the pictures, whatever new information about the space, about the formation, about the galaxy, formation of stars, about the formation of galaxies, it will have a far-reaching effect. And you know that currently James Webb also sent direct images of exoplanet, and today we have approximately 3,000 known exoplanet. So at the same time, very, very important, very, very important is that the James Webb is also doing re-imaging of Phantom Galaxy, which is 32 million light years away from Earth in the constellation of Pisces. And it is a favorite target for astronomers, because they want to study the origin and galactic spiral formation. So all in all, the whole concept of James Webb, the kind of work that James Webb is doing is very, very important for our future development, humankind development. And of course, information is the power, and we all seek information not only about the earth, but also about the space, about the star, about the sun. And that's what James Webb is doing. So this is information for you. I will be meeting again with the next historical information tomorrow. Till then, please stay tuned for the next item with the next program, which is tarot reading session for all of you. See you.
Hello, welcome to all people who are here, and I'm starting my tarot reading session for today, and I look forward for your questions. And before I start, I just want to say happy Christmas to all of you. Enjoy this day. Happy Christmas to everybody, and let's begin with the birthday reading for all of you. Let's find out what is stored for you today in terms of money, in terms of health, in terms of career. Okay, things are definitely really good, though currently there are a few problems when currently one card which is actually negative. It is indicating that you may witness leaving people, you may witness that things are not working out, but maybe it is a momentary things. ये थोड़े समय के लिए है, लेकिन अगर आप अपना विश्वास रखेंगे, अपनी चीज़ें, अगर आप अपना बर्थडे आज ये रीडिंग बिल्कुल बर्थडे जो आज मना रहे हैं आपने उनके लिए है। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना विश्वास रखिए, अपने में ट्रस्ट रखिए, थिंग्स विल वर्क आउट। और ऐसा बहुत जल्दी आपके लिए समय आने वाला है जब आपके लिए ना केवल मॉनेटरी बेनिफिट होगा, अबेंडेंस का भी इंडिकेशन है। सो थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए, और आगे आने वाले समय में सेलिब्रेशन तो है ही। आज का दिन बहुत ही अच्छा चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है, बट सक्सेस भी है, मॉनेटरी गेन्स भी आपके लिए दिख रहे हैं आने वाले समय में, और ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। Okay, so this is the birthday reading. Now we have Ankita who's saying good morning, and we have Daljit Kaur also saying good morning, good morning. Then we have Jyoti Sharma, Merry Christmas. Jyoti Sharma, how are you doing today? Then we have Neeru, 27 December एग्जाम क्लियर होगा, कार्ड नंबर 2 आप पूछ रही हैं। Okay, so let's find out. So this is number 1, this is 2, and this is 3, and आपने सेलेक्ट किया है नीरू नंबर 2। नंबर 2 आपका डेफिनेटली होगा, न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है, यस कार्ड है आपके लिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे सिर्फ सोचना नहीं है नीरू जी, थोड़ा सा प्लानिंग करके अगर आप आगे बढ़ेंगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन कीजिए, थॉटफुल रहिए। यस कार्ड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ऑल द बेस्ट। आपको ये भी मैं बता देती हूँ, हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो जो भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको उनको एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन बटन दबाना है, ताकि आप कॉन्टेस्ट में शामिल हो सके। और जो भी विनर होगा, जो कि सिस्टम जनरेटेड जो विनर सेलेक्ट सिस्टम ही सेलेक्ट करेगा, तो वो उस पार्टिसिपेंट्स को फ्री एंजल्स रीडिंग दी जाएगी वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़। तो बिल्कुल भी आप देर मत कीजिए, टाइप कीजिए एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन टुगेदर, और बस आप जो कॉन्टेस्ट है उसमें शामिल हो चुके हैं। और आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं फहमीदा की। फहमीदा कीर्ति वासन की फीलिंग, कार्ड नंबर 2। कीर्ति वासन की फीलिंग बिल्कुल भी पॉजिटिव आपके लिए नहीं है फहमीदा। सो एक्चुअली कीर्ति वासन की तरफ से आपका ड्रिफ्टिंग रिलेशन है, वो शायद आपको अभी तो बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। कार्ड नंबर 3 बोल रही हैं कि शादी होगी क्या। अब देखिए, वो ऑलरेडी आपको छोड़ के जाने की तैयारी में है, और शादी होगी तो ऐसा भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर ये नो कार्ड है आपके लिए फहमीदा, सो यू हैव टू बेयर विद दैट। आप परेशान मत होइए, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान कीजिए। कभी कभी वो नेगेटिव जो चीज़ें आती हैं उनमें सबसे पहले हेल्थ पर ही असर होता है फहमीदा जी। तो पहले आपका प्रायोरिटी सब कुछ छोड़ के आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ का ही बताया जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट फहमीदा।
सो इसके अलावा जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमारा एक नया पैटर्न हमने शुरू किया है। इसके अंदर हम ना केवल टैरो रीडिंग लेते हैं, ना बल्कि हमारे पास कंपनीज, बिजनेस टिप्स, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम में कवर करेंगे। और इस समय 2 तरीके के कॉन्टेस्ट आपके चल रहे हैं। द पर्सन who will actually start joining by joining exclamation and join button, तो उनके लिए अलग से एक कॉन्टेस्ट है। और जो टैरो रीडिंग में है, वो जो भी या अभी दिख रहे हैं जो भी लोग, वो भी अगर एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन बटन करेंगे तो लास्ट के अंदर सभी लोगों को, जो कॉन्टेस्ट के विनर होंगे, उनको जो भी विनर होगा उसको एंजल्स रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ वर्थ 1000 रुपीज आपको दी जाएगी। सो प्लीज ज्वाइन कीजिए। तो ओनली आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ है टाइप एक्सक्लेमेशन साइन ज्वाइन टू ज्वाइन द रैंडम ड्रॉ जो सिस्टम directed है। So all the best, please join for the contest। And at the same time we have Neeru card number, अच्छा फहमीदा कार्ड नंबर 1 जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 1 आपके लिए। फहमीदा देखिए बिल्कुल भी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, एकदम नेगेटिव है, डेथ कार्ड है। तो ये ऑलरेडी आज आपका लिए अच्छा दिन नहीं है। तो थोड़ा संभल के, थोड़ा पॉजिटिविटी का हाथ ज़्यादा आप पकड़ें आज एटलीस्ट। तो सो दिस इज इट। नीरू अर्श की फीलिंग कार्ड नंबर 2। अर्श की फीलिंग आपके लिए पॉजिटिव है, बैलेंस करके चीज़ों को आगे बढ़ाइए। सो ऑल द बेस्ट, अच्छा है, पॉजिटिविटी है आपके लिए। देन वी हैव दलजीत कौर कार्ड नंबर 1 फ्रॉम हरजीत जी। कार्ड नंबर 1 फ्रॉम हरजीत जी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। जो भी अगर आप हरजीत की तरफ से कुछ भी सुने या जनरली भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। फेक न्यूज़ पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, लाइज को विटनेस करना पड़ सकता है आपको। सो ये बात है, तो जस्ट टेक केयर। एंड अर्निंग हब, हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? एंड देन फहमीदा, थैंक यू मैम, यू आर वेलकम फहमीदा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। अर्निंग हब का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। कॉन्टेस्ट में कैसे ज्वाइन करना है मैडम, प्लीज टेल द प्रोसेस। ओके, तो नीरू जी करना क्या है, आपके जो कीबोर्ड है उस पे एक्सक्लेमेशन साइन, देखिए स्क्रीन पे भी लिखा हुआ अगर आप देख पाए, तो एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन बटन दोनों को बटन ही ज्वाइन टाइप कर दीजिए। और जैसे ही आप ये दोनों ज्वाइन ये टाइप करेंगी ना, वैसे ही आप कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाएंगी। और जो कॉन्टेस्ट में जो विनर है वो सिस्टम जनरेटेड है और रैंडम ड्रॉ है। तो आप जल्दी से एक्सक्लेमेशन साइन को टाइप कीजिए और ज्वाइन को टाइप करके बस यू आर देयर नीरू जी। सो डू दैट। और ऊपर स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है ये सब। देन अर्निंग हब जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 2। अर्निंग हब जनरल रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव है, प्रॉमिसिंग है अर्निंग हब, क्योंकि मॉनेटरी गेन्स आपको दिख रहे हैं आज, और आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़, स्पेशली मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में आपके गेन का इंडिकेशन दिख रहा है। सो दिस इज़ इट। और जैसे कि मैं बता रही थी कि आप 10 बजे से ही हमको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने प्रश्न भी आप 10 बजे से भी डाल सकते हैं। और पिछले दिनों शायद 4-5 दिन में अवेलेबल नहीं थी, और इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पाई। बट अभी हम रेगुलर रहेंगे, और ना केवल टैरो है, बट आप अपने अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के हम टॉपिक्स लेकर आए हैं जो आपको बेनिफिट कर सकते हैं। जॉब ढूंढ रहे हैं तो हम कंपनी के डिटेल्स जो हर एक स्टेट में है उनका डिटेल्स भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, डेली बेसिस पर आएंगे। और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस टिप्स के भी डिटेल्स हैं, और टैरो रीडिंग तो है ही, साथ में 2 तरह के कॉन्टेस्ट
के लिए है। एक में हम आपको जो रैंडम है, जो सिस्टम जनरेटेड है, उसमें हम टैरो रीडिंग जो हम देंगे, एंजल्स रीडिंग फॉर द विनर, जो रैंडमली सिस्टम सेलेक्ट करेगा। और इसके अलावा अगर आप हमको वॉच करते हैं और वहाँ पे भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपके लिए ऑरिकल रीडिंग का व्यवस्था हमने की हुई है। सो जल्द से जल्द आप एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन दोनों चीज़ें टाइप कीजिए और शामिल हो जाइए एक रैंडम ड्रॉ में। So all the best। और अब हम लेते हैं ओके। सो अब आपके और कोई प्रश्न है तो हमें बताइए। हमारे बीच में है बिमला मिश्रा जी, जो कि हमारी मेंबर हैं। हेलो बिमला जी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद, एक तो मैं भी अवेलेबल नहीं थी और आपसे भी बहुत बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। बिमला मिश्रा जी ने ज्वाइन कर लिया है, बिल्कुल। आप और अब्दुल से नीरू ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो हमारा रैंडम ड्रॉ निकलने वाला है एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, और अर्निंग हब ने भी ज्वाइन किया है। ठीक है, सो ऐसे ही आप एंट्रीज डालते जाइए और आपका एंड ऑफ द प्रोग्राम में आपका ये जो है ड्रॉ निकलेगा और जो भी विनर होगा उसके लिए हम एंजल्स रीडिंग करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं और रीडिंग करते हैं काजल सोनी की। सॉरी, पहले तो बिमला मिश्रा जी की कर लेते हैं। बिमला जी गुड मॉर्निंग। आपने कोई प्रश्न नहीं डाला है, तो अगर आप प्रश्न डाल देती हैं तो मैं आपका रीडिंग कर लूंगी। इन द मीन टाइम मैं काजल सोनी का प्रश्न लेती हूँ। क्या वरुण यादव मुझसे बात करते हैं? ये बोला है, और कार्ड नंबर 2 लिया है उन्होंने। देखिए, कंफ्यूजन का है, ये नेगेटिव कार्ड है आपके लिए काजल सोनी जी। तो ये एक बहुत कंफ्यूजन है, कई चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो अभी तो नो ही समझा जाएगा इस के लिए काजल सोनी जी। ओके, कार्ड नंबर 2 नीरू पूछ रही हैं कि अर्श वॉच माई स्टेटस। नहीं, वो वॉच नहीं करते हैं, नो कार्ड है आपके लिए। रेणु जी, एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन ये टाइप करना है। आपने सिर्फ ज्वाइन बटन ही किया है, सो प्लीज थोड़ा दोबारा से एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन बटन ये दोनों साथ में टाइप करने हैं, जैसे कि आप देख रही हैं बिमला मिश्रा जी ने किया है उस तरीके से। और वैसे वहां पे भी लिखा है स्क्रीन पर, तो वो भी आप चेक कर सकती हैं। ओके मैम, मेरे लिए अगर करियर में अच्छा आने वाला है, प्लीज चेक। आपके मतलब करियर में कुछ अच्छा होने वाला है, ये आप पूछना चाहती हैं। तो कार्ड नंबर 1 और फिर नीचे लिखा मैम मैं भी टैरो सीख रही हूँ। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। बट आप जो भी पूछना चाहती हैं, आपने कार्ड नहीं सेलेक्ट किया है बिमला जी। हाँ, तो आप आगे करियर में अच्छा होने वाला है, तो मैं आपके लिए ऑरिकल कार्ड लेती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये इनको हटा देती हूँ बिमला जी। करियर का रीडिंग मैं आपके लिए करती हूँ। 1 मिनट, एक बार रिशफल कर लूँ। अच्छी बात है, आप टैरो सीख रहे हैं। टैरो बहुत ही एक सूडो साइंस होता है बिमला जी, और ये बहुत कुछ आपको बता सकता है, आपके लिए पॉइंटर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो अच्छी बात है कि आप टैरो सीख रही हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आपका करियर में आगे क्या अच्छा होने वाला है। सो देखिए, पहली बात है कि जो भी आप करें बिल्कुल शिद्दत से चीज़ें करिए। जब तक शिद्दत से और बिल्कुल 100% पॉजिटिविटी, और मतलब जैसा होता है ना कि भाई मुझे ये करना है, प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ जब तक आप नहीं करेंगे, जैसे कि आप देख पा रही हैं, प्योरिटी ऑन इन योर थॉट प्रोसेस, आपकी सोच में प्योरिटी होनी चाहिए। आप जो कर रही हैं उसमें बिल्कुल जैसे होता है ना कि एकदम स्ट्रांगली वो करेंगी और ये सोचेंगी कि मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। दूसरी बात है फाइंड बैलेंस,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बैलेंस नहीं चीज़ों को कर पाते हैं, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो बिमला जी ये भी बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू टैरो के 2 चीज़ें आपके लिए। पहले तो बैलेंस कीजिए चीज़ों को, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, और जो भी करना चाहती हैं करियर में वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल शिद्दत से चीज़ों को हैंडल कीजिए, बिल्कुल प्योरिटी ऑफ हार्ट ऑनेस्टी के साथ करेंगी तो आपका ये काम ज़रूर पूरा होगा, सक्सेस भी आपको मिलेगी। तो ये है आपकी रीडिंग आज के लिए बिमला जी। आई होप गॉड ब्लेस यू, आपका सारा काम फटाफट जल्दी से हो जाए। और जैसे कि मैंने बोला है कि हमारा रैंडम ड्रॉ चलेगा, उसके लिए एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन दोनों को टाइप करना है एक साथ, और फिर आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। रैंडम ड्रॉ निकलेगा। अभी तक सिर्फ 2 ही लोग शामिल हुए हैं, तो बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए। अब मैडम मेरे हस्बैंड मनोज की फीलिंग मेरे लिए क्या है? ओके, आप ठीक है, मैं आपके लिए लव डेक लेती हूँ और फाइंड आउट करती हूँ कि आपके लिए फीलिंग क्या है आपके हस्बैंड की। लेट्स फाइंड आउट। विमला मिश्रा जी 1 मिनट। सो आपके लिए फीलिंग क्या है? और ओके देखिए, आपकी फीलिंग्स के अंदर थोड़ा आपको समय लग सकता है, पहली बात तो ये आ रही है। और चैलेंजेस भी आपके लिए हैं इसके अंदर करेंटली अगर हम देखा जाए। और इसमें जब तक आपके जो मतलब जिस तरह की फीलिंग आप देख रही हैं अपने हस्बैंड को लेकर, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप अथक मेहनत करेंगी और मतलब सिंसियरिटी के साथ अगर चीज़ों को हैंडल करेंगी तभी आगे चीज़ें जाकर आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बट एक एग्रेशन भी नहीं दिखाना, बस आराम से सीमलेसली काम करती रहेंगी कोई क्वेरल के बिना, तो चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए आगे अच्छी हो। यहाँ पे एक नेगेटिव कार्ड आपके लिए आ रहा है, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। हालांकि ये जो है ये पॉजिटिविटी का इंडिकेशन है, जहाँ पर आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने पैरों पे आप खड़ी रहें, अपने फिनेंशियल स्टेटस को आप ढंग से हैंडल करेंगी तो ये ऐड ऑन होगा आपके लिए। और रियलिस्टिकली चीज़ों को हैंडल करना सीखिए बिमला जी। और इमोशनल तो ठीक है, बट रियलिस्टिक चीज़ें को हैंडल करेंगी। टाइम आ गया है आपके लिए कि आप अपने पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, जिसमें ना केवल आपको मॉनेटरी गेन्स हो, बल्कि आप बिल्कुल जैसे कि पहले भी आया था, प्रैक्टिकल होकर रियलिस्टिकली होकर अपने आप का डेवलपमेंट करेंगे। इसका असर आपके रिलेशन में ज़रूर पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान कीजिएगा। तो यहाँ पर रिलेशन के लिए पहली बात है बिमला जी कि आपको बिल्कुल अच्छे से हार्ड वर्क करना होगा, सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगी तब जाके मनोज की, क्योंकि अभी तो अगर देखा जाए लिटरली तो ये बदला जाएगा कि नो का इंडिकेशन है, बट साथ को ये बताया जा रहा है कि पुट योर हार्ट एंड सोल इन द रिलेशनशिप और अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक गोल्स बनाएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप के हो या फाइनेंशियल गेन के हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हो, तो आपको फायदा हो, क्योंकि अभी लैक ऑफ मनी तो दिख रहा है आपकी तरफ से। सो ये इंडिकेशन है, थोड़ा सोच विचार करके आगे एक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू विमला जी, ऑल द बेस्ट। नाउ कमिंग बैक टू माय 1 कार्ड रीडिंग, एंड आप हमारे बीच में हैं। ओके सो अभी तक 2 एंट्रीज आई हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि प्लीज एक्सक्लेमेशन एंड जॉइन दोनों को एक साथ टाइप करना है, तब आप लकी ड्रॉ में ऑलरेडी शामिल हो जाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही एंट्रीज हैं, सो डू इट नाउ। काजल, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? कार्ड नंबर 1, बिल्कुल मिलेगी आपको। यस कार्ड है आपके लिए। थोड़ा आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, बट थोड़ा सा आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, या मतलब गाइड के साथ, किसी गाइडेंस या मेंटर के साथ थोड़ा सा वर्क करेंगी ना काजल जी, तो आपको बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए। सो अच्छा है, आपकी फ्रेंड है या आपके टीचर हैं, उनकी हेल्प आप लेना मत भूलिएगा। देन कार्ड नंबर हस्बैंड, परशुराम की फीलिंग मेरे लिए आज कैसी हैं? आज आपके लिए फीलिंग
ओके है, यस कार्ड है डेफिनेटली, लेकिन इमोशन से आज के रिलेशन में काम नहीं चलेगा। आज के दिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अगर आप हैंडल करेंगी तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अभी आपके पास पोटेंशियल है इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का। सो ऑल द बेस्ट रेनू। देन वी हैव तानिया खजूरिया, आर्यन की फीलिंग, कार्ड नंबर 2। आर्यन की फीलिंग आपके लिए पॉजिटिविटी का इशारा लेकर आई है, न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है, यस कार्ड है। सो ऑल द बेस्ट तानिया जी। एंड देन वी हैव जनरल रीडिंग, कार्ड नंबर 2 दोबारा से पूछ रही हैं तानिया जी। तानिया जी आपके लिए भी बहुत ही लवली है, द वर्ल्ड कार्ड है। तो जो आप चाहती हैं वो आपके लिए, जिस तरह का रिजल्ट चाहती हैं वो आपके लिए जरूर मिलेगा। बस अपने में पॉजिटिविटी रखिए, चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। नया साइकिल आपके लिए विच इज़ पॉजिटिव साइकिल, वो आपके लिए शुरू होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। लवली यस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यस है आपके लिए, ऑल द बेस्ट। देन वी हैव करमपाल, गुनदीप की फीलिंग, कार्ड नंबर 2। गुनदीप की फीलिंग पॉजिटिव है, गुनदीप से मिलने का चांस हो सकता है। जनरली भी ट्रैवल इज ऑल्सो ऑन द कार्ड। प्लानिंग के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आपके लिए करमपाल जी ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद के रिजल्ट ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं ना, तो उनको उस तरह से हैंडल करें, स्पेशली रिलेशनशिप में इसकी भी ज़रूरत होती है। सो यस कार्ड है, ऑल द बेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेनू इज सेइंग थैंक यू। और जल्दीज कौर, मैंने आपके लिए 1 कार्ड लिया है, हरजीत का ऑलरेडी रीडिंग में कर चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमारा जो हमारा सेशन है वो हमारा 10 बजे शुरू होता है। सो एवरीबडी उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम ले रहे हैं। साइंस का है, बिजनेस ट्रिप्स का है, और टॉप कंपनीज, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो टॉप कंपनीज की डिटेल्स आपको दी जाती हैं। साइंस और हिस्ट्री का भी हमारा सेशन है, जिसमें आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर जैसे क्विज़ भी है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारे पास ना केवल एक हमारे पास ड्रॉ है, बट हमारे पास 2 ड्रॉज हैं। और जो एंट्रीज, जो रैंडम एंट्रीज आप कर रहे हैं अभी, जो कि अभी 2 एंट्रीज ही आई हैं हमारे पास, तो उनके लिए हम एंजल्स रीडिंग, जो विनर्स होंगे, जो रैंडम ड्रॉ होगा, उनके लिए हम एंजल्स रीडिंग करेंगे। इसके अलावा अगर आप इतने सारे जो हमारे चंक्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके लिए हमारे पास ऑरिकल रीडिंग है। तो जो भी विनर होगा, तो 2 तरह की रीडिंग अभी हम लोग कर रहे हैं आज से आपके लिए। 1 इज ऑरिकल रीडिंग, 1 इज एंजल्स रीडिंग। तो इन दोनों जो क्विज है, जो ड्रॉज है, उनमें आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। अभी जो रैंडम आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं रैंडम ड्रॉ में, उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन ये टाइप करना है। और अभी हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, तो टाइप कीजिए और शामिल हुई ये रैंडम ड्रॉ में, ताकि आप जो भी लकी वन है वो एंजल्स रीडिंग पा सकें इस ड्रॉ के द्वारा, विच इज़ वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़। सो ये नया तरह का पैटर्न है हमारे प्रोग्राम का, जिसमें ना केवल टैरो रीडिंग है बट बहुत कुछ है। सो 10 बजे, जैसे कि मैंने बोला आपको, 10 बजे हमारा ये स्ट्रीमिंग शुरू होता है, तो आप इसमें 10 बजे शामिल हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, साथ में विनर भी बन सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। और जैसे कि मैंने बोला कि पिछले दिनों वी वर नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू, सो क्योंकि वी वर प्रिपेयरिंग फॉर न्यू पैटर्न ऑफ द प्रोग्राम, हम नया तरीका का शो आपके लिए तैयार कर रहे थे।
और अभी दलजीत कौर बोल रही हैं थैंक यू, यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू। रेनू ने भी बोला है थैंक यू, यू आर वेलकम रेनू जी। करमपाल थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। करमपाल जी थैंक यू सो मच। और आप सभी से दोबारा से गुजारिश है, फटाफट टाइप कीजिए एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन, ये साथ में टाइप करेंगे तो आप हमारे रैंडम ड्रॉ में शामिल हो पाएंगे। अभी हमारे पास ओनली 2 एंट्रीज आई हुई हैं, और अगर आपके प्रश्न हैं तो फटाफट हमें लिख भेजिए। बिमला जी जो हमारी मेंबर हैं, उन्होंने अपने प्रश्न डाले थे, उनका रीडिंग हमने कर दी है। और बिमला जी भी बोल रही हैं थैंक यू, यू आर वेलकम बिमला जी, गॉड ब्लेस, टेक केयर योरसेल्फ, अच्छे से अपना ख्याल रखिए। और हमेशा सभी लोगों के लिए है कि आप हमेशा खुश रहिए, खुश रहेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो सक्सेस आएगी, और हेल्थ भी। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेल। सो आज से हमने, जैसे कि मैंने बताया, नया तरह का पैटर्न, हमने नया तरह का शो शुरू किया है, जिसमें टैरो नहीं है, बहुत कुछ आप पा सकेंगे, सीख सकेंगे, और आने वाले समय में भी कई सारी चीज़ें हम इन प्रोग्राम में ऐड करेंगे डेफिनेटली। तो अभी हमारे पास 2 एंट्रीज हैं रैंडम ड्रॉ के लिए, और हमारे पास हमारे पास अभी समय भी है, 1 आवर है। और सैटरडेज, जैसे हमने पहले बताया था, सैटरडेज के, क्योंकि अभी हमारा आखिरी सैटरडे रहेगा, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप मेंबर बन जाइए, क्योंकि सैटरडेज को मेंबर्स ओनली। बिमला जी आपके लिए भी है कि बिमला जी आपने अभी तक ये जो फैसिलिटी है मेंबर्स की, वो आपने अभी अवेल नहीं की है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो बिमला जी आप सैटरडे ज्वाइन मुझे कर सकती हैं, क्योंकि हम मेंबर्स की रीडिंग हम सैटरडेज को करेंगे आने वाले समय, दैट इज 2024 के लिए। कुछ खास करना नहीं है सभी लोगों को। प्लीज बिकम द मेंबर एंड अवेल द फ्री रीडिंग रिगार्डिंग 2024, जिसमें आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। So let me take a break of half a minute. सो वी हैव रीटा ने अपना प्रश्न रखा है, और सभी को एक बार फिर याद दिला देती हूँ कि प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, जहाँ पर वर्थ ऑफ 1000 रुपीज एंजल्स रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन दोनों को एक साथ टाइप करना है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 एंट्रीज हैं, सो प्लीज एंटर टू अवेल दिस ऑफर
और जो भी लकी वन होगा उसके लिए एंजल्स रीडिंग वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़ बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो रीटा जी, कार्ड नंबर 2 है, मेरा कल का दिन कैसा जाएगा? कल का दिन आपके लिए अच्छा जाएगा, पॉजिटिव है, यस कार्ड है आपके लिए, न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है। सो ऑल द बेस्ट। सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए रैंडम ड्रॉ में टू अवेल। रीटा जी, करमपाल जी, बिमला मिश्रा जी ने तो कर लिया है ऑलरेडी, तानिया खजूरिया। तानिया का एक और प्रश्न है कि युवराज की फीलिंग, कार्ड नंबर 3, युवराज की फीलिंग आपके लिए पॉजिटिव है। थोड़ा सा अपना भी आपको एफर्ट करना चाहिए तानिया खजूरिया, युवराज के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी पर्सनालिटी में एनहांसमेंट आप लाएं, और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट इज़ द की। तो वो करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। हालांकि यस कार्ड है, पॉजिटिविटी है। सो ऑल द बेस्ट। ओके, तो रीटा का दूसरा प्रश्न है, रीटा जी वाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन द रैंडम ड्रॉ? इसमें आपको करना है एक्सक्लेमेशन साइन, ऊपर लिखा हुआ है, ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, आप देख सकती हैं, एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन को टाइप करना है। सो यू आर इन द लकी ड्रॉ टू अवेल एंजल्स रीडिंग। अब आपका प्रश्न है, क्या न्यू पैरेट जनवरी मंथ में मिलेगा? ओके, आप न्यू पैरेट ढूंढ रही हैं आप। ओके, तो पिछली बार जो हमारी बात हुई थी, तो उसके लिए आप इसमें उसका ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और मिलेगा बिल्कुल अगर आपका मन है, और ये एंटायरली आपके विल पावर पे है, और यस कार्ड है आपको। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि यस आपको पैरेट मिल सकता है, और रीटा जी, और अगर आप बिल्कुल फोकस हैं कि मुझे पैरेट चाहिए, तो ये काम हो जाएगा। लेकिन बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस बार उसका ध्यान ज़्यादा रखिएगा, ठीक है ना? सो ऑल द बेस्ट। ये आपकी विल पावर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। यस कार्ड है आपके लिए। आपको इसमें अगर कहीं से असिस्टेंस चाहिए तो आप ज़रूर लीजिएगा किसी से, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए पैरेट के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, तो ज़रूर लीजिएगा। बट कंट्रोल रखिएगा आपके पेट पर, और खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए आप, और उसको भी खुश रखिए। ऑल द बेस्ट। और जो भी जगह बनाएं अपने घर में, अगर आप पैरेट ला रही हैं तो नॉर्थ ईस्ट साइड में उसका केज रखें, उसकी केज रखें, वो उससे उस ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट ध्यान रखिए, आप बोल रही हैं, मैं सही बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच। तो आप जो भी केज लाएं उसको ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसको नॉर्थ ईस्ट साइड में रखें, और सर्दियों के दिन हैं तो डेफिनेटली। हाँ, एक बार मिस्टेक हो गई है, और मुझे पता है कि जब हमारे पेट को कोई तकलीफ होती है या हम उससे बिछड़ जाते हैं तो कितना दुख होता है रीटा जी, ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। आदिति, शुभम की करेंट फीलिंग, कार्ड नंबर 3, ये आदिति पूछ रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं आदिति दी शुभम की फीलिंग्स को लेकर। इनफैक्ट ब्रेकअप का इंडिकेशन दिख रहा है आदिति जी। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। और सभी को एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि हमारा रैंडम ड्रॉ चल रहा है। आदिति जी, रीटा जी, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और ये रैंडम ड्रॉ निकलेगा एट द एंड ऑफ दिस शो, जहाँ पर आपको वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़ जो एंजल्स रीडिंग है फ्री दी जाएगी। तो जो भी विनर होगा, तो उसके लिए कैसे एंटर करें इस ड्रॉ में, तो उसके लिए बस करना ये है कि एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन दोनों टाइप कर लेना है, और टाइप करके एंटर दबा दीजिए, और आप इस ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। और ये सिस्टम जनरेटेड ड्रॉ है, तो प्लीज़ फटाफट इसमें शामिल हुई और बिकम दैट लकी वन आज। तो ऑल द बेस्ट।
सो एक बार फिर मैं याद दिला देती हूँ कि अब हमारा जो ये शो है ये एक्चुअली 10 बजे शुरू होता है, और 10 बजे ना केवल हम टैरो भी शामिल करेंगे, बट इसमें हिस्ट्री, बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज, वास्तु और क्विज, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, या वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, साइंस एंड माइंड, जिम तीनों हैं। इसके अलावा टैरो तो है ही हमारे बीच में है चिकन कुमार जी, जो कि जिन्होंने अपने अभी सुपर चैट यूज़ किया है। तो अभी मैं उनका प्रश्न लेती हूँ, रानी भाभी की करंट फीलिंग। और तो मैं सबका बाईपास करती हूँ, और सबसे पहले चिकन कुमार जी का रीडिंग मैं करूँगी। रानी भाभी की करंट फीलिंग, लव डेक लिया हुआ है चिकन कुमार जी आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट कि आज टैरो आपको क्या एडवाइस, क्या पॉजिटिविटी, क्या नेगेटिविटी का इंडिकेशन देता है। लेट्स फाइंड आउट क्या गाइडेंस देते हैं लव डेक्स आपके लिए। चिकन कुमार जी बिल्कुल ध्यान से अपनी रीडिंग आप सुनिए। ओके, सो पहली बात है कि यहाँ पर थोड़ा ये जो पहला कार्ड है ये एक लेकर आया है इंडिकेशन अनस्टेबिलिटी का। मतलब स्टेबिलिटी, जहाँ फीलिंग की बात है तो वहाँ स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है पहले कार्ड के अंदर, और ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिख रही है चिकन कुमार जी। और इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इंक्लाइंड हैं, अगर आप रानी भाभी के लिए आपके दिल में कोई भी फीलिंग है तो वो फीलिंग को बरकरार रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि, हालांकि ये कार्ड ये बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप चीज़ों को छोड़ दें। अगर आप कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसमें लगे रहते हैं तो हमें सक्सेस देर सवेर ज़रूर मिल जाती है, चाहे लेट मिले बट मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ इंडिकेशन दिया जा रहा है यहाँ पर। पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए चिकन कुमार जी है कि स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। जो आप कर रहे हैं रानी भाभी को लेकर, आपके दिल के अंदर जो भी एफर्ट करते हैं, चाहे आपको कुछ भी आपको मिले, नेगेटिव मिले, पॉजिटिव मिले, उसका नहीं है, बट आपको इसमें लगे रहना होगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अभी आज के सिचुएशन में एक एडवांटेज आपको जरूर मिल रही है। तो एडवांटेजियस पर हैं आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपका जो रेस्पॉन्स हो रानी भाभी की तरफ से वो नेगेटिव हो, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपको इसमें लगे रहना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको परसुएशन, रानी भाभी को परसुएशन करना चाहिए, और इसमें आप अपने प्रिंसिपल पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। इतना भी ध्यान रखिए। जो आप सोच रहे हैं, परसुएशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप की सोच है या आप जो करना चाहते हैं उससे एकदम डाइवर्ट हो जाएं या एकदम कुछ अलग ही करने लगे। तो परसुएशन कीजिए, स्टैंड ऑन द ग्राउंड, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी, ये जो सेकंड कार्ड है वो आपके लिए पॉजिटिविटी, और ये भी दोनों पॉजिटिविटी का इंडिकेशन है। यस कार्ड है। कॉपरेशन आपको मिल सकता है रानी भाभी आगे आने वाले समय में चिकन कुमार जी, लेकिन इसमें आपको लीडर बनकर इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है अभी, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड्स की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा टॉलरेंस की भी आपके लिए ज़रूरत रहेगी। और अभी ये जो फुल कार्ड है ये आपको ये बताता है कि टाइम आ गया है कि अगर आपको चैलेंज कुछ लेना पड़े तो आप ज़रूर लीजिएगा इस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि चैलेंज होता ना, जब तक चैलेंज नहीं लेते तब तक चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती। तो चैलेंज आप लीजिए, दोनों ही पॉजिटिविटी का इंडिकेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो परसू कर रहे हैं थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए कि क्या एक्चुअली चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग इज इंडिकेटेड। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा प्लानिंग कीजिए, ट्रैवल कीजिए, मिलिए जुलिए रानी भाभी से, बात कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिल रहा है, इमीडिएट अभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए ये कार्ड आपको बोलता है कि प्लीज़ होल्ड योर ग्राउंड, लगे रहिए जो आप करना चाहते हैं। करंट फीलिंग नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको परसू करना बंद कर दें, क्योंकि निगोशिएशन कीजिए, सेल्फ
अपने अपना भी ख्याल रखिए, रानी भाभी का भी ख्याल रखिए, और कॉम्प्रोमाइज अपने प्रिंसिपल्स पे मत कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज अपने प्रिंसिपल पे किया उस दिन आप अपने ग्राउंड जो है वो आप छोड़ देंगे, या आपका साथ एंजल्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको बिट्रेल मिल सकता है, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि आपको समझदारी के साथ हैंडल करना है और आपको डिसिप्लिन लाना है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले समय में बहुत मिलने वाली है, और वहां पर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेंगे इस रिलेशन के लिए तो न्यू बिगनिंग बिल्कुल अच्छे से दिख रही है आपको। सो मेक ए इंपॉर्टेंट चॉइस एंड बिफोर, बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग कीजिए, थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन इन दिस रिलेशनशिप। दोनों पॉजिटिविटी है, यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट थिंग्स विल वर्क आउट इफ यू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस रिलेशन में उसको अच्छे से हैंडल करेंगे और एक चॉइस करेंगे लाइफ में कि भाई हाँ ये मुझे करना है और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा और इसको सक्सेस बना के रहूँगा। सो ये एक एस्पेक्ट है जो आपको हैंडल करना होगा अभी फॉर सम टाइम। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, थिंग्स विल वर्क आउट। चाहे आज फीलिंग्स चैलेंजिंग हो, दैट डजंट मैटर कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस, डिसिप्लिन एंड make a thoughtful decision regarding this relationship. Chikun Kumar ji, all the best. God bless you. Take care of yourself very well, and all the best. May God bless you. Thanks for using Super Chat, Chikun Kumar ji, and see you with lot of success ahead. Now we have ओके, देन वी हैव अदिति। शुभम, मुझसे यूनियन होगा, पहले ही हमने बोला है ना कि आपके लिए जो कार्ड आया था बहुत ही चैलेंजिंग था, ब्रेकअप का इंडिकेशन है, तो ये कार्ड ज़्यादा नहीं है। जनरल लीडिंग फॉर 5 days, कार्ड नंबर 3, अदिति गुप्ता बोल रही है, जनरल लीडिंग आपके लिए पॉजिटिव है। मॉनेटरी गेन्स दिख रहे हैं आपके लिए अदिति जी, सो ऑल द बेस्ट। एंड अबेंडेंस है, तो जो भी अच्छे मूवमेंट है स्पेशली करियर को लेके, फाइनेंस को लेकर, उस पर आप ज़रूर अच्छा काम कर सकते हैं अदिति गुप्ता, ऑल द बेस्ट। और जैसे कि मैंने बोला, प्लीज़ ज्वाइन द कॉन्टेस्ट। हमारे पास 2 एंट्रीज आई हैं, स्क्रीन के ऊपर देखिए, टाइप बस एक्सक्लेमेशन साइन एंड ज्वाइन। आप करेंगे तो उस ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, और जो भी ये रैंडम ड्रॉ होगा जो मशीन जनरेटेड है, तो जो भी विनर होगा उसके लिए एंजल्स रीडिंग सबके लिए की जाएगी, मतलब उनके लिए की जाएगी। सो फटाफट ज्वाइन कीजिए इस कॉन्टेस्ट में। सो ऑल द बेस्ट। और अब रीना है, कार्ड नंबर 1, क्या मेरा प्रमोशन फिजिक्स सब्जेक्ट में होगा? मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये यस कार्ड है। पहली बात तो रीना जी, होगा, लेकिन उस सक्सेस को बरकरार रखने के लिए, उस सक्सेस को हैंडल करने के लिए आपको लगातार उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो रीना जी प्लीज़ डू इट। यस कार्ड है, बट फिर भी आपके मेहनत हमेशा बरकरार रखिएगा, इस प्रमोशन को में हो जाएगा, और उसको स्टैब्लिश रखने के लिए, सक्सेसफुल उस प्रमोशन में रहने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। सो ऑल द बेस्ट। और हम अब आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 2024 में करियर में चेंज होगा, रीना पूछ रही हैं। देखिए, पहली बात मैं आपके लिए आज कार्ड पढ़ देती हूँ। आज हमने नए तरीके से पैटर्न के साथ हमने प्रोग्राम आज आप सबके लिए कर रहे हैं, तो मैं आज आपका पढ़ देती हूँ। बट मैं आइडियली रीना जी मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ बिकम द मेंबर। सैटरडे को हम लोग मेंबर्स ओनली की रीडिंग करते हैं, जहाँ पर हम 2024 के बारे में बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो आपको बस करना ये है कि ज्वाइन कर लीजिए अकुलमैच, दैट विल हेल्प यू। हालांकि मैं आज आपका पढ़ देती हूँ। देखिए, बिल्कुल होगा, पॉजिटिविटी है, लेकिन आपको आज से ही इस चेंज के लिए एक्शन लेना पड़ेगा रीना जी। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगी तब तक वो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। फॉर मोर डिटेल्स रीना जी बिकम मेंबर एंड अवेल दिस रीडिंग ऑफ 2024 ऑन कमिंग सैटरडे, जो कि इस साल का लास्ट सैटरडे होगा। सो फटाफट आप मेंबर बनिए, ज्वाइन मेंबरशिप।
महक कार्ड नंबर 2, क्या मेरी शादी करेंट बॉयफ्रेंड 1 मिनट, करंट बॉयफ्रेंड नमीम अहमद से होगी? और कार्ड नंबर 2 है आपका महक, बिल्कुल होगी, यस कार्ड है। इसमें एक्चुअली आपकी फैमिली में जो एल्डरली लेडीज हैं ना, या एक कोई लेडी है, उनकी हेल्प अगर आप लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा महक जी। सो यस कार्ड है आपके लिए, बट थोड़ा हेल्प की, पुश की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्या मेरे पेरेंट्स नमीम को एक्सेप्ट करेंगे? कार्ड नंबर 1। देखिए, डिपेंड करता है कि कितना आप सिंसियरली इस चीज़ को हैंडल करती हैं महक, क्योंकि ये जो आपके और आपके पेरेंट्स का जो इशू है, इसके अंदर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दूसरी बात है कितना अच्छे से आप कन्विंस कर सकती हैं अपने पेरेंट्स को नमीम को लेकर, और नमीम कितना क्योंकि ये रिलेशन इक्वालिटी का, जितना आप देंगी, जितना आप परसुएट करेंगी, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर एंटायरली डिपेंड करता है। यस हो सकता है, लेकिन ये बहुत कुछ आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है महक जी। करंट फीलिंग ऑफ ए, कार्ड नंबर 1 चांदनी पूछ रही है। वेरी वेरी पॉजिटिव, यस कार्ड है आपके लिए चांदनी जी, ऑल द बेस्ट। क्या मुझे ए व्हाट्सएप पे अनब्लॉक करेगा? कार्ड नंबर 2, अब बिल्कुल करेगा, यस है। आज चीज़ों को लेके थोड़े इमोशनल हैं ए, जिनके बारे में आप पूछ रही हैं। सो यस कार्ड है, दोनों ही प्रश्नों के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए। ऑल द बेस्ट चांदनी जी। ए मेरे लिए अपने दोस्तों से मीटिंग के लिए सजेशन ले रहा है। ओके, ये आप पूछ रही हैं कि मतलब वो कोई गाइडेंस ले रहे हैं आपसे मीटिंग करने के लिए अपने फ्रेंड से? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है, नो कार्ड है आपके लिए, तो फ्रेंड्स का कोई रोल नहीं है एक के लिए आपसे मीटिंग करने का। सो टुडेज ब्लेसिंग चांदनी जी के लिए, टुडेज ब्लेसिंग आपके लिए यस है। थोड़ा सा विजडम से और अपने इंट्यूशंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो भी एक्शन लें विजडम के साथ लें, सो दैट विल हेल्प यू, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे चांदनी जी। और सबको एक बार मैं फिर बता देती हूँ, जॉइन द रैंडम ड्रॉ टू अवेल एंजल्स रीडिंग वर्थ ऑफ 1000 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पर आपको करना सिर्फ इतना है कि एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन को टुगेदर टाइप करना है। सारी डिटेल्स ऊपर स्क्रीन पर भी है, तो एंट्री कीजिए ड्रॉ में, रैंडम ड्रॉ के अंदर, और प्रोग्राम के लास्ट में आपके लिए रैंडम ड्रॉ निकाला जाएगा। जो भी विनर होगा उसको एब्सोल्युटली फ्री एंजल्स रीडिंग दी जाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि आज से एक नए पैटर्न से हमने अपना ये स्ट्रीमिंग शुरू किया है। इसमें आप 10 बजे शुरू होता है ये स्ट्रीमिंग, और 1 बजे तक चलेगा। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। साइंस है, बिजनेस टिप्स हैं, टॉप कंपनीज जो अगर बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो बिजनेस टिप्स का प्रोग्राम देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉप कंपनीज, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके स्टेट में टॉप कंपनीज की डिटेल्स आप पा सकेंगे। टॉप कंपनीज में वास्तु के रिलेटेड टिप्स आपको दिए जाएंगे इस प्रोग्राम में। इसके अलावा साइंस और माइंड जिम में है, जो कि क्विज प्रोग्राम है, जिसके अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन एनहांस योर नॉलेज, और टैरो तो है ही, और आज से हम ना केवल एंजल्स रीडिंग करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के, बाद हम ऑरेकल रीडिंग भी करेंगे। तो डिटेल्स सारे आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स हैं, आप रीड कीजिए एंड पूरा फायदा उठाइए चीज़ों का। बिमला गुप्ता जी, कार्ड नंबर 3, करंट फीलिंग ऑफ शशि बहुत ही पॉजिटिव है। टाइम आ गया है कि आपके न्यू बिगनिंग का आप स्टार्ट कर सकती हैं। यहाँ पर
नो कांटेक्ट होने के बाद भी आपको अभी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होने पर, जब चैलेंजिंग सिचुएशन होती है बिमला गुप्ता जी, तो ज़रूरी है कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर कर उस पर कुछ काम किया जाए। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन को आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेकर उसको हटा सकती हैं, नो कांटेक्ट भी हटा सकती हैं। और क्योंकि अभी लैक ऑफ डिसिप्लिन है, चीज़ों को सिंसियरिटी या शिद्दत के साथ चीज़ों को नहीं हैंडल कर रही हैं, तो अगर आप एक ये पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप शशि को लेकर, तो प्लीज वर्क ऑन दिस, मेक ए इम्पॉर्टेंट चॉइस और बिफोर एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो अभी एक डिसीजन लीजिए, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, उनका भरपूर फायदा उठाइए एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। अच्छा, रीटा पूछ रही हैं कि मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो देखिए रीटा जी, पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो स्क्रीन पे देखिए, वहां पे ऊपर लिखा है टाइप एक्सक्लेमेशन साइन ज्वाइन। तो ये एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन दोनों को साथ में टाइप करना है कीबोर्ड से और एंटर करना है। जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगी, यू विल बी इन द ड्रॉ, you will be able to participate in the draw। रीटा जी, तो देख लीजिए और टाइप करके, अभी हमारे पास 2 एंट्रीज हैं ड्रॉ की, तो आप फटाफट टाइप कर लीजिए कीबोर्ड से और एंटर दबा दीजिए टाइप करने के बाद, दैट्स इट। हाँ, तो रीटा जी आप फिर 2024 की आपने पूछा है कि भाई की शादी होगी, आपने शायद 2024 के पहले भी पूछा था। तो रीटा जी आपसे मैं गुजारिश करूंगी, प्लीज बिकम द मेंबर एंड आप डेडिकेटेड अपने लिए, अपने भाई के लिए रीडिंग ले सकती हैं ऑन सैटरडे, कमिंग सैटरडे, जो कि लास्ट सैटरडे है इस साल का। तो बस कुछ नहीं करना है रीटा जी, आपको membership join करनी है, that's it। And then you can ask n numbers of questions on Saturday in the tarot session। चांदनी बोल रही हैं थैंक यू, यू आर वेलकम। सोनम कुमारी is saying good morning सोनम जी, आप सभी को बहुत मिस किया। आई वॉज नॉट अवेलेबल फॉर फ्यू डेज लास्ट वीक, बट अब हम आ गए हैं एक न्यू प्रोग्राम के साथ। सभी को इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ। ये प्रोग्राम शुरू होता है सुबह 10 बजे, 1 बजे तक चलेगा। इसमें साइंस, बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज, वास्तु, हिस्ट्री एंड माइंड जिम सब कुछ है, और टैरो तो है ही आप सबके लिए। सो सोनम जी, राज मुझे याद करते हैं, बिल्कुल याद करते हैं। सोनम कुमार जी, ऑल द बेस्ट। अच्छा है, यस कार्ड है आपके लिए। देन सोनम कुमारी, राज की करंट फीलिंग मेरे लिए, करंट फीलिंग बहुत बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है। सोनम कुमारी जी, बैलेंस करके चीज़ों को आगे बढ़ाइए, ऑल द बेस्ट। और फिर अगेन प्लीज पार्टिसिपेट इन द ड्रॉ। ए ने पूजा को मेरे बारे में सब बता दिया है। कार्ड नंबर 2, एक्चुअली बता तो दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बता, लेकिन कभी कभी होता है ना, फाइनल पॉइंट्स हम नहीं बताते हैं, बस रैंडम बताते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कैजुअली शायद बताया है उन्होंने, तो ये सिचुएशन है। शशि व्हेन अनब्लॉक मी ऑन व्हाट्सएप, तो व्हेन के लिए तो आपको सुपर चैट यूज करना पड़ेगा बिमला जी। देन रुखसाना बानो, मैडम मेरी शादी सैप से होगी, कार्ड नंबर 3।
बिल्कुल होगी, एज यस कार्ड है, लेकिन जल्दबाजी किसी चीज में मत कीजिए रुखसाना। और आपको थोड़ा एंजल्स या मतलब अपने ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए इस विषय पर। इसके अलावा थोड़ा चैरिटी भी करेंगी ना, तो दैट विल ऑल्सो एड इनटू गुड कर्मा, और ये आपको हेल्प ही करेंगे। हालांकि यस कार्ड है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जेनरोसिटी के साथ हैंडल कीजिए फॉर सम टाइम अपनी लाइफ और अपने रिलेशंस। क्या करंट पार्टनर के साथ मेरा फ्यूचर है न्यू के साथ? तो चांदनी जी, इसके लिए तो लव रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी। न्यू कनेक्शन है आपका, क्या स्टेटस है, इसमें तो डीप रीडिंग की जरूरत है चांदनी जी। प्लीज सेलेक्ट सुपर चैट और बिकम मेंबर, दैट विल मोर बेनिफिशियल। क्योंकि अगर मेंबर होंगे तो ना केवल आपको अनलिमिटेड रीडिंग दी जा सकती है, बल्कि आप 2024 की रीडिंग जो सैटरडेज को होगी वो भी आप अवेल कर सकते हैं। उसमें आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो लुक इनटू दैट। रुखसाना बानो इज सेइंग शुक्रिया, थैंक यू रुखसाना, गॉड ब्लेस। गुड्डू शर्मा, कार्ड नंबर, क्या प्रशांत संध्या के साथ शादी करेगा? नहीं का इंडिकेशन है आज तो गुड्डू शर्मा जी, आपको थोड़ा डीप रीडिंग और लेना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे तो शादी क्या, रिलेशनशिप में भी क्योस दिख रहा है अभी तो गुड्डू शर्मा आज तो, सो यू हैव टू बेयर विद दैट। विमल गुप्ता, शशि व्हाट्सएप से अनब्लॉक करेगा? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बिमला जी, ये इसके लिए। अच्छा, व्हाट्सएप से आपने कार्ड भी नहीं चुना है बिमल गुप्ता जी, सो दिस इज इट। कार्ड चूज कीजिए या सेलेक्ट कीजिए, सुपर चैट या मेंबर बनिए। और एक बार फिर बता देती हूँ, आज से एक्चुअली हमारा शो शुरू होता है 10 बजे, 1 बजे तक चलेगा स्ट्रीमिंग। और इस स्ट्रीमिंग में टैरो रीडिंग तो होगा ही, साथ में 2 तरह के ड्रॉज निकाले जाएंगे, एक एंजल्स रीडिंग के लिए, एक ऑरेकल रीडिंग के लिए। तो अभी जो करंट जो चल रहा है ड्रॉ, उसकी एंट्रीज ओपन है, तो आप लोग उसके लिए अगर आप शामिल होना चाहते हैं इस ड्रॉ में, अभी 2 एंट्रीज ही हैं हमारे पास। तो अगर आप ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं और एंजल्स रीडिंग वर्थ ऑफ 1000 रुपीज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइप करना है एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन टुगेदर, साइन कर लीजिए, एंटर दबा दीजिए। यू विल बी इन द एंट्रीज फॉर द ड्रॉ, जो कि सिस्टम जनरेटेड ड्रॉ है सभी के लिए, और ज्वाइन कीजिए और यू कैन टेक दिस angels reading worth of 1000 rupees absolutely free. And संध्या शर्मा, कार्ड नंबर 3, क्या शेरू प्यार करते हैं मुझे? बिल्कुल रोमांटिक है बहुत ज्यादा आपके लिए, बहुत ही लवली इंडिकेशन है, प्रिंस चार्मिंग है संध्या जी शेरू आपकी लाइफ में। आपको बहुत जल्दी इस पर कोई पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट, रोमांस इज इन द एयर, बहुत प्यार करते हैं आपको, कोई घबराने की बात है नहीं। सो बिमल गुप्ता, कार्ड नंबर 3, शशि व्हाट्सएप से अनब्लॉक करेगी? नो का कार्ड है बिमल जी, आज हार्ट ब्रेक दिख रहा है, तो यू हैव टू बेयर विद दैट बिमल गुप्ता जी। हमारे पास अभी ओनली 30 मिनट्स रह गए हैं एक्चुअली, तो आप सभी से गुजारिश है कि संध्या शर्मा जी बोल रही हैं, थैंक यू, यू आर वेलकम टुडे, यू आर ऑन अ वेरी स्वीट स्पॉट संध्या। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास अभी 2 एंट्रीज आई हैं लकी ड्रॉ की, एंड इसमें ज्वाइन करने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन एंड ज्वाइन टाइप कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ऑलरेडी डिटेल्स दी हुई हैं स्क्रीन पर, आप पढ़ के भी कर सकते हैं। ये चाहते हैं मेरी शादी किसी और से हो जाए, इसके लिए तो आपको ऑरिकल रीडिंग लेनी पड़ेगी चांदनी जी, या आप लव रीडिंग लीजिए थ्रू सुपर चैट। तो दिस इज इट,
वी हैव नीरा खादिया 2024 में मुझे अनब्लॉक करेगा। ठीक है नीरा जी, आज मैं आपको एक बता देती हूँ कि आज एक नए पैटर्न से हमने ये स्ट्रीमिंग शुरू की है। सुबह शुरू होता है 10 बजे। एंड नीरा खादिया जी, आपने 2024 की रीडिंग मांगी है तो मैं अभी आपके लिए कर देती हूँ आज, क्योंकि आज एक नए तरह का शो है और पहली बार हम ये कर रहे हैं। तो नीरा जी, कार्ड नंबर 2 आपने कहा है तो बिल्कुल वो करेंगे। और अभी भी आज उनके मन के अंदर पॉजिटिविटी है नीरा खादिया जी आपको लेकर। पुरानी बातें आप आज याद कर रहे हैं, तो ये पुरानी बातें याद करते करते अनिल जी डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करेंगे। यस कार्ड है आपके लिए, ऑल द बेस्ट। सो हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपसे हमारे जो स्ट्रीमिंग में 2 तरीके के कॉन्टेस्ट रहेंगे। एक कॉन्टेस्ट ऑलरेडी जारी है, नीरा जी, चांदनी जी, संध्या शर्मा जी, बिमल गुप्ता जी, कि आपको बस करना ये कि एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन दोनों को टाइप करके एंटर कर देना, ताकि आप एंजल्स रीडिंग ले सकें वर्थ ऑफ 1000 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। सो दिस इज इट। सो ऑल द बेस्ट। चांदनी, क्या अंशुल मुझे न्यू ईयर विश करेगा? कार्ड नंबर 2। नहीं, कंफ्यूजन है चांदनी जी, कुछ दिल में ऐसा है जो रॉन्ग है वो आपके लिए अंशुल लेकर बैठे हुए हैं। सो उसके लिए या तो आप क्लैरिटी लाइए, कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ताकि चीज़ें सीमलेसली हो जाएं आपके रिलेशन में अंशुल को लेकर, और फिर आने वाले समय में अच्छा होता चला जाए। सो फॉर दैट, एंड चांदनी जी, वन मोर थिंग, अगर आप चाहें तो मेंबर बन सकती हैं, और 2024 की जो रीडिंग है वो आप सैटरडे आप ले सकती हैं, क्योंकि ये सैटरडेज ओनली फॉर मेंबर्स है। और जो भी मेंबर्स हैं वो बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ करना ये है कि आपको ज्वाइन करना है मेंबरशिप, और फिर 2024 में करियर, फिनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, सबके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। तो अभी हमारे पास हैं 28 मिनट्स। तो अगर आप चाहें तो आप सुपर चैट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चुकुन कुमार जी ने किया था, और इसके अलावा आप मेंबर बन सकते हैं। देखिए, संध्या शर्मा भी 2024 की बात पूछ रही हैं, तो संध्या जी हैं या चांदनी जी हैं या नीरा जी हैं या डेफिनेटली संध्या शर्मा हैं। तो ये सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेंबर बन जाइए, फिर आप बहुत सारे ढेर सारे सवाल पूछ सकते हैं, कि मेंबर्स के लिए अनलिमिटेड सवालों के आंसर्स हम देंगे, और उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए आप। एंड सैटरडेज को हम मेंबर्स ओनली शो करेंगे। सो उसमें आप 2024 के रिलेटेड बहुत कुछ पूछ सकते हैं, बहुत सारी रीडिंग डिफरेंट डेक से ले सकते हैं। सो दिस इज़ इट। और इसके अलावा प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, रैंडम ड्रॉ निकलने वाला है एट द एंड ऑफ द शो। आई एक्सक्लेमेशन एंड ज्वाइन टाइप करके एंटर दबाना है, दैट्स इट। देन यू आर इन, या आपकी एंट्री हो जाएगी इस ड्रॉ के अंदर। संध्या, 2024 मेरी भी परमानेंट जॉब होगी। आपने संध्या शर्मा जी कोई कार्ड नहीं चुना है, प्लीज़ सेलेक्ट द कार्ड संध्या शर्मा।
ओके, सो नाउ संध्या है सेलेक्टेड, मेरी परमानेंट जॉब लगेगी कार्ड 2। देखिए, अब बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपकी परमानेंट जॉब को लगने में संध्या शर्मा जी। और जब तक मतलब हमारी विशफुल थिंकिंग तो होती है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमारी परमानेंट जॉब भी लगे, लेकिन जो आपके सक्सेस और आपके बीच में जो चैलेंजेस होते हैं ना, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो पहली बात आपको आज ये गाइडेंस देते हैं टैरो कि आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पहले परमानेंट जॉब और आपके बीच में पहले आप उनसे फाइट आउट कीजिए, उनको हटाइए, और तब जाके आपको जो सक्सेस मिलेगी वो बहुत परमानेंट होगी। सो अभी टाइम आया है, टाइम है आपको चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनसे जूझने का, और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हटाने का, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। सो यू नो दैट कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं संध्या जी, प्लीज वर्क ऑन दैट। इंस्टाग्राम पे ए मेरा स्टेटस वॉच करते हैं, ही लव्स मी, कार्ड नंबर 1, नो कार्ड है आपके लिए। चैलेंजेस हैं चांदनी जी आपका, और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नहीं है, इनफैक्ट बैड एनर्जीज दिख रही हैं चांदनी जी, सो यू हैव टू बेयर विद दैट। Sandhya Sharma is saying thank you. You are welcome, Sandhya. God bless. और एक बार फिर याद दिला देती हूँ कि आज से हमने कुछ रिशफल किए हैं स्ट्रीमिंग के अंदर। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की है, ओनली फॉर द बेनिफिट ऑल द कॉलर्स, ऑल द व्यूअर्स, क्योंकि अभी हमारी स्ट्रीमिंग शुरू होती है सुबह 10 होगी, मतलब कल से, आज से शुरू हुई है नया पैटर्न के साथ। तो आप 10 बजे शुरू होती है, यू कैन ज्वाइन एट 10 और ख़त्म होगी अराउंड 1 PM एवरी डे। और इसमें ना केवल टैरो रीडिंग होगी, बल्कि उसमें साइंस, बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज, स्पेशली उन लोगों के लिए जो या तो नई जॉब ढूंढ रहे हैं और टॉप कंपनीज अपनी स्टेट में फाइंड आउट करना चाहते हैं ताकि वहाँ पे अप्लाई कर सकें, तो उनकी डिटेल्स हम आपको देंगे। इसके अलावा कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बिजनेस टिप्स का प्रोग्राम है। इसके अलावा घर में सुख शांति, हार्मनी, पॉजिटिविटी चाहते हैं तो वास्तु का भी सेशन है आप सभी के लिए, जो आप अपने घर में फेर बदल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रेमेडीज विच विल बी गिवन इन वास्तु सेक्शन। इसके अलावा हिस्ट्री है, इसके अलावा माइंड जिम है जो कि क्विज प्रोग्राम है, साइंस है, जो अगर आप अपने कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सारे टॉपिक्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड so join that time. Okay, तो आरओ में मेरा गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाएगा, चांदनी पूछ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा चांदनी जी, लेकिन आपके लिए टाइम लगेगा, और इस टाइम लगने के जो समय है इसमें आपको अपने ये जो आपका गोल है इसमें मेहनत कीजिए, पुट योर हार्ट एंड सोल, दैट विल रियली हेल्प यू। ऐसा नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बट टाइम आपको लग सकता है, ये बिल्कुल बताया जा रहा है चांदनी जी। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस टाइम इन प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज इट। और जैसे कि मैंने बताया है कि इस बार हम अपनी स्ट्रीमिंग में एक ड्रॉ नहीं बल्कि 2 ड्रॉ करेंगे, और एक ड्रॉ ऑलरेडी चल रहा है। इसमें आप एंट्रीज अपनी एंटर कीजिए, अपना नाम एंटर कीजिए, क्योंकि ये रैंडम ड्रॉ है जो मशीन जनरेटेड है। तो इसके लिए कैसे ज्वाइन करेंगे इस ड्रॉ में? इसमें आपको एक्सक्लेमेशन साइन एंड ज्वाइन दोनों को टाइप करना है टुगेदर, और बस टाइप करके एंटर करना है। अभी 2 एंट्रीज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी भी एंट्री हो जाएगी, और प्रोग्राम 20 मिनट्स बाद अप्रॉक्सीमेटली हम ड्रॉ निकालेंगे, और जो भी विनर होगा उसको हम एंजल्स रीडिंग देंगे। सो विच इज़ वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर द
विनर एट द सेम टाइम। आपको ये भी बता दूं कि 10 बजे शुरू होता है, 1 बजे ख़त्म होगा स्ट्रीमिंग, और इसके अंदर एक ड्रॉ नहीं है बल्कि 2 ड्रॉ हैं। तो 2 ड्रॉ, एक एंजल्स है और एक ऑरिकल है, तो आप दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। देन अभी हमारे बीच में है स्वाति पटेल। हर्ष शिखा को मैसेज करेगा इन द एंड ऑफ द ईयर, कार्ड नंबर 2 नहीं का इंडिकेशन है स्वाति पटेल, नो का इंडिकेशन है। और इस अगर मैसेज चाहती हैं तो आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़कर इसमें काम करना पड़ेगा। परसिस्टेंटली हार्ड वर्क चाहिए आपके रिलेशंस को। स्वाति पटेल, हार्ड वर्क के बिना सक्सेस नहीं है, और सक्सेस है भी तो भी डिले है, तो यू हैव टू बेयर विद दैट। Swati Patel, please participate in this random draw to avail angels reading। आपको करना क्या है, exclamation sign and join दोनों को एक साथ टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। आप एंटर करिए और उसके बाद आप इस लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगी। डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रीन पर दी गई हैं। स्वाति पटेल, ओके। ए के लिए चांदनी कार्ड नंबर 2 पूछ रही हैं। कार्डनी ए के लिए चांदनी कार्ड नंबर बहुत ही पॉजिटिव है, लवली इंडिकेशन है, सक्सेस दिख रहा है, राइज ऑफ सक्सेस है। थिंग्स आर रियली रियली गुड एज फॉर ए इज कंसर्न। कृष्ण गोपाल शर्मा, मैडम क्या राजीव शर्मा मुझे न्यू ईयर पे कॉल करेंगे? तो कार्ड नंबर 2 है कृष्ण जी, नो का इंडिकेशन है। तो कृष्ण गोपाल शर्मा जी नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है। एंड कृष्ण गोपाल शर्मा जी आप मेंबर बन सकते हैं। सैटरडेज को हम मेंबर्स ओनली रीडिंग करेंगे फॉर द ईयर 2024। तो बिकम द मेंबर एंड अवेल दिस फैसिलिटी। आज के दिन कृष्ण गोपाल शर्मा जी आपके लिए नो कार्ड है। स्वाति पटेल, जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 2, जनरल रीडिंग आपके लिए पॉजिटिविटी से भरी हुई है। इट्स अ सेलिब्रेशन। स्वाति पटेल आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए पॉजिटिविटी है, तो इन पॉजिटिव मूवमेंट्स का भरपूर फायदा उठाइए फॉर समथिंग बिगर गोल। स्वाति पटेल, ऑल द बेस्ट। एंड हम आगे बढ़ते हैं। मनी अबेंडेंस के लिए हमें क्या रूम में प्लांट लगाने चाहिए? डायरेक्शन। ओके, तो चांदनी जी इसके लिए ना आपको वास्तु जो सेक्शन है ना वहाँ पर आपको बताना चाहिए, मिलना चाहिए मुझे। बट मनी अबेंडेंस के लिए एक्चुअली मनी प्लांट आप लगा सकती हैं घर में डेफिनेटली, और इसको ऊपर की तरफ लगाइए, नीचे ना रखिए। और ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन इज गुड, उस समय लगा सकती हैं। साउथ में बिल्कुल मत लगाइएगा, और जहाँ पे क्लटर हो वहाँ पर भी मत लगाइएगा। तो ये बात का ज़रूर ध्यान कीजिएगा। स्टडी टेबल है तो स्टडी के नॉर्थ या ईस्ट में लगाइएगा। अगर जहाँ पे धूप आ रही हो तो वहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पानी में लगा लेते हैं मनी प्लांट, लेकिन धूप नहीं हो पाती तो इससे पत्ते सूख जाते हैं, तो ऐसा मत होने दीजिएगा। एंड स्वाति पटेल, विल आई गेट परमानेंट जॉब इन द ईयर 2024? तो आपने फिर कार्ड नहीं चुना है स्वाति पटेल। So please select the card. कार्ड 2 आपने सुना है कि आपको मिलेगी 2020 डिफाइन। बिल्कुल मिल सकते हैं, यस कार्ड है आपके। स्वाति पटेल, न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन। ऑल द बेस्ट। स्वाति पटेल इज सेइंग थैंक यू, यू आर वेलकम स्वाति।
Okay, so participate in this random draw. स्वाति पटेल, आपका रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आपकी गवर्नमेंट जॉब को लेकर हाँ, सो 50 मिनट्स आर लेफ्ट और जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ, तो प्लीज़ join this random draw इसमें to avail angels reading worth of 1000 rupees absolutely free। तो आज से हम अपने जो हमारा सिर्फ एंजल्स रीडिंग नहीं होगी बट ऑरिकल रीडिंग भी होगी और हमारा जो स्ट्रीमिंग है वो एवरी डे 10 o'clock शुरू होगा और उसमें साइंस, बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज ये है। So this will help you to have more insight in your career, in your job search, in business establishment। वास्तु भी है, history भी है। So please avail advantage of all the information beside tarot reading। So अभी हमारे बीच में है पायल राणा। हेलो पायल राणा। और मैं एक्चुअली बाईपास करूँगी क्यू फॉर पायल राणा। उन्होंने यूज़ किया है सुपर चैट। पायल राणा जी, पायल राणा बोल रहे हैं निशांत जरिया से मेरी कुंडली मैच होगी मैम, और अब नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, रिश्ते हो जाएगा क्या, करियर में सब अच्छा रहेगा। सो पायल राणा जी, पहले तो मैं लेती हूँ आपके लिए लव रीडिंग। लव डेक लिया है और पायल राणा जी लेट्स फाइंड आउट कि आपके निशांत के साथ क्या रिलेशन का इंडिकेशन है। आपके लिए 3 कार्ड्स लिए हैं आपके लिए पायल राणा जी। तो निशांत से मेरी कुंडली मैच होगी, पहली बात है। सो देखिए, पहली बात है थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपकी मैच होगी या नहीं। यहाँ पर इसको मैच करने के लिए या जो प्रोसेस है मैचिंग का, या जो आपका मैच करा रहे हैं उनकी तरफ से भी ये जो बोलते हैं ना कि राइट पर्सन एट राइट टाइम, इस तरह का कुछ दिख रहा है आपके लिए। सो ये ज़रूरी है कि जो ज़्यादा समझदार हों, जो ज्योतिषी जो आपकी कुंडली मिला रहे हों, वो उनसे आप ज़्यादा हेल्प लीजिए। कभी कभी हम कैजुअली हेल्प लेते हैं और फिर हमें चैलेंजेस आ जाते हैं। तो पहली बात ये ज़रूरी है कि ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कार्ड है, बट ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक सही कोई भी चीज़ पाने के लिए कभी कभी हमें लंबा सफ़र करना पड़ता है। समथिंग लाइक दैट विल बी हैपनिंग इन योर कुंडली मैच विद निशांत। दिस इज वॉट इज बीन इंडिकेटेड। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोलूँगी कि नेगेटिव है, टाइम लग सकता है आपको, ये आपके लिए ज़रूरी बात है। और कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा सब कुछ अच्छा हो गया, अभी डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे, थोड़ा सा वो ना कन्फ्यूजन का जो स्टेट है वो सम टाइम हो सकता है। तो इसके लिए आप ज़रूरी है पायल राणा जी कि आप ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा समय ले सकता है आपके निशांत कुंडली मैच होने में, और जो नेक्स्ट स्टेप होने में रिश्ता हो जाएगा। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है पहली बात, लेकिन पॉजिटिविटी आने के लिए आपको समय लग सकता है, ये बिल्कुल डेफिनेट है यहाँ पर। लेकिन इस साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जिनसे भी आप मिलवा रही हैं, एक एक्सपर्ट से मिलवाएंगी जो आपको शॉर्ट आपको रेमेडी दे सके, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है पायल राणा जी कि ये सारे प्रोसेस के अंदर प्लानिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। रैंडम आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कईयों के लिए हो सकता है कि जो आपने सोचा एकदम हो जाता है, वो दे वर लकी वंस पायल राणा, लेकिन आपके लिए ये नहीं है। आपको इसमें प्लानिंग करना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़े इस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रिश्ता, और इसमें भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है पायल राणा जी। और
ये एक लगातार, अगर आप बहुत सीरियस हैं निशांत को लेकर, अब मतलब 100%, 101% सीरियस हैं, तो आपको थोड़ा सा परसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर, एक फाउंडेशन पर ले जाने के लिए, और तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बैठकर सोचकर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, और इसके लिए थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग, आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी सोचना पड़ता है। आउट ऑफ बॉक्स सिर्फ करियर में नहीं सोचना होता पायल राणा, हमें अपने रिलेशनशिप में भी सोचना होता है। तो ये आप करिए, परसिस्टेंट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़कर थोड़ा सा चैलेंजेस लीजिए, ताकि आपका जो आप चाहती हैं वो हो जाए, उसकी तरफ आपके रास्ते खुल जाएं। जो कभी थोड़ा बहुत जो आपको अटकलें आ रही हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो पहली बात है प्लानिंग, दूसरी बात है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, एक कैजुअल नहीं कि चलो ये हो जाए उसके बाद फिर देख लेंगे, ऐसा नहीं। आप एक प्लान कीजिए और तब जाके आप परसिस्टेंटली हार्ड वर्क कीजिए, ताकि आपका ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्क का दोनों कार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही लवली इंडिकेशन है, ये फैमिली लाइफ दिखाता है। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पे इनिशियली आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलनी ही है, और उस मिलने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए डेफिनेटली दिख रहा है, और उसमें आपको घबराना भी नहीं चाहिए कि भैया मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके लिए जॉय, घर बनाने का जो होता है ना कि बिलोंगिंगनेस, हैप्पी इवेंट्स, मैरिज हो सकता है, रोका हो सकता है, रोका होने के बाद मैरिज हो सकती है, नए घर में आप शिफ्ट हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। सो थिंग्स आर रियली पॉजिटिव आने वाले समय में, लेकिन इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए तो थोड़ा सा प्लान कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, करना है मुझे ये सोचिए, और कैसे करना है, परसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है, प्लानिंग करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको करनी ही होगी, करना ही चाहिए आपको, ताकि जो रिजल्ट, जो इस तरह का रिजल्ट आप देख रही हैं, वो आपके लिए जॉय, बिलोंगिंगनेस, फैमिली लाइफ, ये सब कुछ लेकर आएगा और आ सकेगा। और जब तक आप, ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको चलना ही होगा पायल राणा जी। तो इसको देखिए, कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेंटर एडवाइस लीजिए, लोगों से बात कीजिए, जिनसे आप, निशान से बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इनको प्लानिंग का ही पार्ट समझिए आप चीज़ों को। और जहाँ तक आपका करियर का है तो सब अच्छा रहेगा, तो उसके लिए एक कार्ड मैं आपके लिए निकाल देती हूँ आपको। सो ऑरिकल रीडिंग में आपके लिए करियर के लिए कर रही हूँ पायल राणा जी, और यहाँ पर भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, मतलब आस्क फॉर हेल्प। कहीं आप को कुछ प्रॉब्लम है तो टाइम आ गया, दो चीज़ें आप कर सकती हैं, एक तो ईश्वर की प्रार्थना, ये हर लेवल पर आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरी बात, जिस करियर या जिस जॉब की बात कर रही हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा असिस्टेंस लीजिए, जो आपको दे सकते हैं। हर एक से असिस्टेंस नहीं मिलती है, जो आपके लिए काम कर सकते हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए और उनसे हेल्प लीजिए, पूछिए कि मैं क्या कर सकती हूँ ताकि मेरा करियर सब कुछ अच्छा हो जाए और रहेगा। और तब तक हेल्प के बिना ये आपको थोड़ी पुश की ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय में, स्पेशली इन करियर। तो दिस इज इट पायल राणा जी, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर यूजिंग सुपर चैट। टेक केयर योरसेल्फ वेल and be positive, be enthusiastic in your career, in your personal life. All the best. पायल जी बोल रही हैं, ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटिफुल reading. It is a reading which I want to boost you so that आपका जो भी आपका गोल है वो जल्दी से पूरा हो जाए। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये नेगेटिव है। आपको पायल राणा जी ये करना है कि मुझे ये कैसे अचीव करना है। इस माइंडसेट के साथ आप काम करेंगी तो डेफिनेटली आपका ये काम बहुत जल्दी पूरा होगा, चाहे वो करियर को लेकर हो या रिलेशन को लेकर हो। तो ये करना है, ये पॉजिटिविटी और ये जज्बा ये जरूरी है आपके लिए। ऑल द बेस्ट पायल राणा जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेल। अब हम वन कार्ड रीडिंग की तरफ चलते हैं और लेते हैं
Okay, Neera. Happy Christmas, Neera. God bless. Then we have सोमा रॉय कार्ड नंबर, मेरे जो गोल्ड चेन खो गया है वो मिल जाएगा. एंड ओके, देखिए आप ना जहाँ पे आपको ढूंढना चाहिए ना सोमा रॉय, वहां पे आप ढूंढ नहीं रही हैं. कैजुअल है, आपका खो गया, इस बात का दुख तो है, लेकिन जो आपको करना चाहिए कैजुअल अप्रोच है. थोड़ा सा सीरियसनेस लाइए. जो करना है किसी चीज को ढूंढने में, वो एस्पेक्ट आपके लिए जरूरी है, तो वो काम कीजिए, इससे आपको फायदा होगा. Harsh feel guilty or not for his behavior, Swati Patel. Actually, yes, and he is ready to say sorry. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप भी वर्कड अप मत रहिए स्वाति पटेल. थिंग्स विल वर्क आउट, और जैसा आप चाहती हैं वैसा हो सकता है, और जैसा ही वो जो होगा उससे आपको ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, और एक रिलेशन में भी एक नया दौर शुरू हो सकता है. सो दिस इज इट. विक्रम कार्ड नंबर 3, मेघना की करंट फीलिंग फॉर मी. कार्ड नंबर 3, मेघना की करंट फीलिंग बहुत बहुत पॉजिटिव है. विक्रम आज आपके लिए यस कार्ड है, और बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं विक्रम. आज आप डेट पे जा सकते हैं. आज आप, अगर आपने ऑलरेडी काम कर चुके हैं मेघना को लेकर, तो आप एक सेरेमनीज या पार्टी दे सकते हैं. थिंग्स आर रियली रियली गुड. अगर छोटी मोटी या बड़ी भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक अच्छी एडवाइस जो आपको एडवाइस दे सकें, या मेघना को लेकर, या मेघना ही आपको एडवाइस, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हैं. यस कार्ड है आपके लिए. ऑल द बेस्ट. Okay, Payal Rana is saying thank you for motivating. All the best, Payal Rana. Take care of yourself well. और हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं अब, और अगर अभी भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लकी ड्रॉ में, तो आपको बस करना है कि एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन ये टाइप करके एंटर दबाना है. दैट्स इट. अभी हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, और जो भी विनर होंगे, ये सिस्टम जनरेटेड ड्रॉ है, जो भी ड्रॉ में विनर रहेगा उसको एब्सोल्युटली फ्री 1000 वर्थ ऑफ एंजल्स रीडिंग दी जाएगी. सो ऑल द बेस्ट. प्लीज एंटर इन दिस ड्रॉ नाउ. So if you are feeling lucky that you can have this angels reading absolutely free, please enter this draw now. और मैं आगे बता देती हूँ कि आज से हमारा पैटर्न ऑफ स्ट्रीमिंग थोड़ा बदल गया है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM till 1 PM और सो. उसके अंदर बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज का डिटेल्स होगा, जो कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है. टॉप कंपनीज के डिटेल्स आपके स्टेट में हैं, तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है. इसके अलावा वास्तु है, अगर आप अपने घर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, वास्तु कंप्लाइंस चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट इन दिस सेक्शन ऑफ वास्तु रेमेडीज. इसके अलावा साइंस है, इसके अलावा हिस्ट्री है, क्विज है. जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, तो आप यहाँ पर आप कुछ अवेल कर सकते हैं, कुछ ज्ञान आप पा सकते हैं. सो जॉइन. और आप एक नहीं, इनफैक्ट 2 ड्रॉज निकलेंगे, एक ऑरिकल एडवाइस के लिए, एक एंजल्स एडवाइस के लिए. करेंटली एंजल्स एडवाइस के लिए आपको एंटर करना है रैंडम ड्रॉ में, और इसके लिए आपको टाइप करना है एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन बटन. ज्वाइन टाइप करना है, एक्सक्लेमेशन एंड ज्वाइन, और एंटर करिए. और एंटर करने के बाद आप शामिल हो जाएंगे इस लकी ड्रॉ में. और ऑलरेडी 2 एंट्रीज हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. डिटेल्स भी लिखा हुआ है कि टाइप क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं. तो ज्वाइन दिस कॉन्टेस्ट नाउ.
Okay, so find I think only 1 minute is left, और इसके बाद आप you can participate in mind gym जो कि quiz है. उसके बाद ये draw निकलेगा, so please कहीं जाइएगा नहीं, wait for your lucky name जहाँ पर हम angels advice देंगे. So only so see you in this draw after some time. So stay tuned. So see you tomorrow. Bye bye. So, hello friends, welcome to the Mind Gym. And are you feeling lucky? If you are feeling lucky, then you must participate in the lucky draw. As you can see here on the screen, the command that you must send in your message is sign of exclamation followed by join without any gap, and then automatically our system will include you in the lucky draw. The lucky draw will be carried out soon after this quiz, and the person who wins will be given a free angels reading which is worth 1000 rupees. So if you're feeling lucky, you must participate in the free contest. All right, now let's begin the quiz. And this quiz is about the daily trivia, especially the events that took place today, and therefore you must keep following these quiz and important incident that happened today. This will help you prepare for your exams as well. So let's go to the first question, and that is, well, before we start, since it is Christmas today, I would like to wish everyone Merry Christmas, whoever is watching us. And this is an observation, not a question, because today is Christmas and 25th December.
So, did you know that the first written record of Christmas being celebrated was found in the year 352 AD? And before that, even though Christmas was celebrated every year on December 25th, however, there are no written records, so we are not entirely sure. So, we can start our quiz by giving you this trivia, which is in the year 352, first definitive date of Christmas being celebrated on December 25th is recorded. All right, let's move to the next question. Now here comes the question. In the year 1482, English King Edward IV holds a lavish Christmas feast, and the question is, for how many people at his palace? So the whole issue is, while you can send me your answers, I will get the answer displayed on the screen here, and we will celebrate your if your answers are correct. All right. So the whole point is that back in the day, in the 1400th century, a king calling people for his for a Christmas bonanza, Christmas dinner party, and called X number of people, and it became such a big deal that it is recorded in history. Can you imagine? So, what would be your guess? How many people would have attended the king's gala party on Christmas Eve? Can you make a guess? I must tell you that the numbers may baffle you, because such numbers are everyday affair nowadays, but back in the days, attending so many people attending was a big deal, and so much so that it was recorded in the history. So let me give you the answer. Meanwhile, you keep trying guessing the answer for it, because faster you try, better it would be for you. All right, so let me give you the answer to this question, and that is 2000. So 2000 people attending the gala Christmas Eve dinner party organized by the king became such a big deal. From today's standard, this is nothing. This is absolutely nothing from today's standard. So we keep growing. We know that we keep growing, the facility keeps improving, but this incident is recorded in the history, which happened on December 25th. Let's move on to the next question. In the year 1492, which is today, December 25th, Christopher Columbus' flagship runs aground and sinks. It runs aground and sinks. The crew of the ship was left to found a colony till the Columbus returns from Spain. What was the name of his flagship? What was the name of his flagship vehicle, which is the ship which ran aground today on December 25th in the year 1492? So friends, Christopher Columbus' flagship is very well known, although this question is a trick question. Basically, if you know the flagship of Christopher Columbus, using that ship, Christopher went on all his journeys. He actually discovered the new world, which is now known as Americas, North and South, and he was actually riding the flagship, which is the captain's ship. And if you know the journeys of Columbus, then you would actually also know the name of his flagship, which actually ran aground today on December 25th and sank. Okay, while I wait for your answer, I see some answers. Let me display the name. So Edify Learning says Santa Maria. All right, so I'm displaying your name, and Edified Learning, let's find out if your answer is correct. Absolutely right. Santa Maria is the name of the flagship of Christopher Columbus. In that flagship, or the ship, or the captain's ship, Christopher went around sailing the Atlantic, crossed the Atlantic, and discovered the new world, which is now known as America. And by the way, today we call it a pond, not an ocean, because we say that we have crossed the pond. Things have changed so much in past so many years.
But on December 25th, 1492, Santa Maria sank. All right, let's move to the next question. All the best, Edified Learning. Let's see if you can guess the next one. In the year 1599, what is the name of the first city which was established in Brazil on December 25th? 1599, first city of Brazil founded on December 25th. Well, Brazil, if you don't know, is a Portuguese colony, friends. And Brazil was basically established. When the settlers came or the Portuguese guys came, they saw so much of jungle and all that. So, do you know what is the name of Brazil? Brazil is the name of a tree, which if you go to Brazil, if you visit Sao Paulo, you can see the seat of the government in Sao Paulo. And there you will see this tree called Brazil. So since this tree was such a unique tree and the Portuguese settler came from Portugal, obviously they saw this tree and therefore they called this new land Brazil, which is also the name of the tree in the native language, the Incas language, whichever the native tribe was living in that area. So what was the name of the first city? First city in the sense that first European settler city, as we know Brazil as a country today. What is the name of this city? Let me give you the answer. I have not seen any answer so far, but let me go to the answer real quick. It's the city of Natal. City of Natal is the answer, which was the first city established in the country of Brazil by the Portuguese settler. And today Brazil is a Portuguese speaking country, the only country in America which speaks Portuguese. Rest of the other Latin American countries and South American countries speak Spanish. So the only Portuguese area, only Portuguese land in South America is Brazil. Let's quickly move to the next question. In the year 1656, who creates the first pendulum clock? Very simple. You should be able to guess this answer. Let me tell you something. We talk about variables today in the 21st century, and there are all kinds of variables. There is a meter which can track your movement, and it will tell you how many steps you have taken, how many miles you have run, etc. There is a tracker for your heartbeat, and also the watch, etc. The variables of different kinds are there. However, I would say that the variable is not the modern invention. It was invented with the pendulum clock, and when you shrink shrink the size of the pendulum clock to a pocket watch, therefore the pocket watch became the first variable. So, who invented the pendulum? The first pendulum is the question. And I see answer from Edified Learning, and Edified Learning says Christian Huygens. Let me display your name. Christian Huygens is the name that you are giving, Edified Learning. Let's find out if your answer is correct. Absolutely right, Edified Learning. Christian Huygens is a very popular name. If you are a science student, you would know Christian Huygens actually is very popular. He has given a lot of theories and given there are new discoveries that Christian Huygens was instrumental in giving about that, taking this science after the Renaissance to the next level. He is a Dutch astronomer and mathematician. So great. Edified Learning, you are able to give this answer correctly. Christian Huygens is a Dutch national scientist, astronomer, and mathematician. He was also instrumental in inventing the first pocket watch. He used to basically carry his own invention in his pocket and flaunt that. And people used to get surprised that you are carrying time with you, because that was a big deal back in the days. All right, let's move to the next question. By the way, only 2 entries so far in the lucky draw. So if you feel lucky, follow the instructions, type exclamation followed by join, and you can join the lucky draw. All right, let's move to the next question.
real quick. In the year 1868, despite bitter opposition, which president grants unconditional pardon to all persons involved in the Civil War, basically the Southern Rebellion who lost to the Union in the United States of America. So who was the president who actually gave unconditional pardon? Basically, he said nothing has happened, so you are free to go. In my opinion, this is a very amazing thing to do. Back in the days, a president of United States pardoned all the people who rose against the government, seat of the government. It was an act of treason, yet the president pardons them, pardons the people who actually carried out the civil war and was instrumental in raising arm against the state that created the civil war. And it's a bloody war. It was a bloody war. A lot of people died, and a lot of immigrants who were coming from other parts of Europe as a settler, to basically start their career again in the new land, they also died there like cannon fodder. So it was a very bad war. The trench warfare was invented in the American Civil War, which was taken to the new height during the First World War. However, this president pardons all the people who participated in the Civil War. And who was this president? I don't see any answer, so let me give you the answer real quick. That is the President Andrew Johnson. And Andrew Johnson was opposed bitterly for making such a decision, yet he gave that presidential order to pardon every citizen, even though they rose against the state, took the arms against the state, fought a battle with the army of the state. They also lost it, but they were pardoned by Andrew Johnson. Let's move to the next question. In the year 2021, NASA's James Webb Space Telescope was launched in a joint effort by which agencies? On board Ariane 5 rocket from Europe's spaceport in French Guiana. So the two space agencies which collaborated in the launch of NASA's James Webb on December 25th in year 2021. You are supposed to give the answer. You have to give two space agencies which collaborated in the launch, not of making the spacecraft, not for making the spacecraft. That is very clear that the spacecraft James Webb was built by NASA. The question is about only the launch. Which two agencies participated jointly to successfully launch James Webb into space on December 21st, 2021? Do you know the answer? Well, let me give the answer real quick. It is the ESA, which is the European Space Agency, which runs the French Guiana spaceport, from where the ESA launches their Ariane rockets. And by the way, Ariane series of rockets are also managed by ESA and the Canadian Space Agency. So though these two space agencies collaborated and participated in successful launch of the James Webb Space Telescope. Now, James Webb, if you don't know, is the most sensitive space telescope ever launched by humans, and it can, it has an infrared vision which can pierce through the cloud dust and almost reach its vision to the close of the Big Bang. So the idea is to basically see the early galaxies, how the early galaxies were formed, how the early stars were formed, what were the conditions in the initial stages of the formation of the universe. So the scientist wants to basically see using James Webb, the early conditions which existed during the early part of the universe. And James Webb is not capable of showing us the Big Bang, but
soon after the Big Bang, what were the conditions? James Webb Space Telescope will be able to see, because sensitivity of the optical instruments are in the range of infrared, which can be seen through the clouds of dust and even far off distances, given the sensitivity of the instruments are present on the James Webb. So friends, let's see if we have more questions left for today's Mind Gym. So we have come to an end of our quiz today. So thanks for participating. Thanks for watching us live. I will catch you again in Akulmach Live, Akulmach Daily Live Show tomorrow. And thanks for joining the quiz. See you tomorrow. But don't go anywhere, because we are now coming back after some time, after a few seconds, and we will actually carry out the contest, identify the winner, and also provide the free angels reading, which is worth 1,000 rupees or $12 to the winner. Don't go anywhere. So congratulations to Bimla Mishra. Winner is here. And so let's do angels reading for Bimla Mishra. So I hope you are here, and let's find out what angels are actually telling you, Bimla ji. So hold your breath. Let's find out what is there. And okay, so first of all, that whatever you are working upon, Bimla ji, you are ready. Angels are ready to take a leap. So believe in yourself, believe in your angels, Bimla ji. Time has come that you should be pursuing your big goals, your small goals, and you should whatever you are desiring, you will be able to get, because things are ready. What you have to do, you have to take actually help, and there are helpful people in your life, and please do not shy away of taking help, and even ask. There's too much of help. That is what is being indicated in your personal goal, in your professional goals, in your financial goal. Time has come to seek the help, to take the help from the people, and don't feel shy. The people will help you to pursue your dreams. So don't worry. In fact, in the relationship, we have done the reading now, and it is again been indicated. Time has come to really be thoughtful in your relationship, and if you start working on your relationship, if you start working on
career also, yeah, you will get success because angels are in the mood to help you. So don't worry. And they have also given time. So 24 a year from now, you will be on a very good spot, Bimla Mishra ji. That means time 2024 will bring you a lot of good news regarding success, regarding joy, happy moments, harmony. So all are good, all is well. So once again, things are lovely at your end, Bimla Mishra ji. Take care of yourself well. Just believe in yourself and reach out for the right people, for right kind of help. Things will work out. So time has come to believe in yourself. Time has come that things will work out for you. And 2024 is a lovely year which is coming ahead. So all the best. So once again, congratulations for winning this contest today. For now, so now I will be taking a break now for today, but I'll be meeting you again tomorrow. So contact me tomorrow with all kind of shows which we are offering along with the tarot reading. And I just want to tell you that we are starting our streaming at 10 a.m. and will be combination of business tips, top companies, Vaastu, history, and science show, quizzes, and of course tarot reading. So we will be having contest again tomorrow, and we will be having two contests. One is for angels reading, which will be done before the end of the show, and then we will also be having oracle reading. So see you tomorrow. Till then, bye bye.